work on that code here. ठीक है, Instead, मेन कोडिंग let's हमारी run वही है this HTML on हेड an टाइटल मेन्यू बार emulator. हम बना रहे हैं For यहाँ पे। that, we अच्छा, can उसके simply go अंदर to हमारा यहाँ पे Tools and then बॉडी AVD टाइप है, Manager. That ठीक है। stands for जितने भी Android हमारी Virtual कोडिंग होती है Device. या जो भी हम कोड करते हैं वो Let's मैंने open आपको that बताया भी था tool, कि and हमारा here बॉडी I टाइप के actually अंदर ही got होता some है, इसके pre-configured बाहर कोई भी devices. कोड नहीं You लिखा should जाता at least have one that Nexus or some other device which अब is सबसे created पहले with आपको ये installation. देखना होगा कि You can टेबल always टाइप बनाने create a के लिए new आपको virtual device by सॉरी clicking टेबल that बनाने के button लिए here at the आपको bottom. कौन सा टाइप यूज And then करना you होता है। can टेबल choose टाइप का ही which यूज करना होता device you want to है, use. ठीक Let's say है। the Pixel 2. कुछ भी आप देखोगे यहाँ पे Continue, टैग के choose your नेम्स भी ऐसे ही API हैं कि version. आपको Now, अलग typically, से the याद करने की highest जरूरत नहीं है। one टेबल is a बनानी good है तो टेबल choice, टाइप, or the one टेबल that's की like रो the बनानी है default, I should तो say, टी आर टाइप, not necessarily the cutting edge ठीक है। one, but this one. और थोड़ा Click सा next आपको ध्यान तो again. रखना ही पड़ेगा। आप Now टेबल here की रो बनानी है तो on यहाँ पे हमें emulated टी आर टैग यूज करना performance, होता है, you ठीक should है। choose टी the आर टैग हमारा क्लोज hardware होगा। अब emulation मेन्यू for a बार आपने देखा faster होगा, कोई भी हमारा मेन्यू बार रहता emulator. है तो एक The सिंगल रो upper होती settings है, should be fine. हमें यहाँ पे Simply सिंगल रो hit ही बनानी finish, है, एक ही रो and this बनाएंगे should हम लोग, create that ठीक है। new emulator. And you सिंगल can रो then बनेगी। start it by clicking on उसके that बाद play button on the very right here. हेडिंग्स को अगर आप Now this will सेंटर में bring दिखाना up चाह your रहे हैं तो हेडिंग को Android सेंटर में emulator. दिखाने के लिए Now we can of course use अब that डिपेंड करता है कि emulator आप to कौन सा run टैग our यूज कर रहे Flutter app हो। there सपोज too. अगर आप टीडी टैग To यूज कर run रहे हैं it, तो what we टीडी का need to जो do is we need डिफॉल्ट to go अलाइनमेंट back to मैंने आपको that बताया था command वो line क्या where होता we है, previously already डिफॉल्ट ran it अलाइनमेंट on लेफ्ट the होता है, iPhone, ठीक and है। repeat और that अगर आपको Flutter सेंटर run अलाइनमेंट चाहिए command. डिफॉल्ट If you तो still फिर got the आपको old टी एच one टैग यहाँ running, पे यूज which you करना होता probably है, don't have तो if टी you एच आ shut जाएगा down the हमारे old यहाँ पे, simulator, you can always ठीक है। quit the running process सबसे पहला with हमारा जो Control ऑप्शन C. होता है So let's hit वो Flutter क्या run होता है, to run होम, it on our Android जिससे कि emulator अगर यूजर once किसी that दूसरे टैब emulator में did है या boot किसी up. दूसरे पेज के And it अंदर will है, build the होम में project क्लिक करके with the ही वो help क्या of the Android क्या हो जाएगा, SDK that होम में was क्लिक करते ही installed डायरेक्टली together अपने with Android होम पेज में Studio. पहुंच जाएगा, And that ठीक है। first build process can और again किसी take भी a couple वेबसाइट का seconds. सबसे फर्स्ट जो Subsequent पेज ones होता will है be उसे हम होम faster. पेज कहते हैं। And कई now it बार should ये be up and क्वेश्चन आ running. जाता है, Let's view ठीक it. है, एमसीक्यूज के There it अंदर भी आ is. This सकता is है our या device, फिर and this फिलिप्स is के our अंदर भी आ Flutter सकता app. है And we या can ट्रू click the फॉल्स के plus अंदर भी आ button सकता है, to increment this ठीक counter. है। Awesome. तो ये चीज So आपको this पता is होनी how चाहिए we कि किसी भी install वेबसाइट Flutter का फर्स्ट पेज and ये run it होता on है, both the इसे हम iOS क्या and कहते हैं, होम Android पेज। emulators. Now, if you want to run it on real दूसरा devices, ऑप्शन आ you जाएगा can हमारा follow यहाँ the पे steps outlined in the अबाउट का, documentation, but of course, we'll also run it together on a real device later in this course. For now, let's focus on the editor with which we're going to work on this code. अबाउट इज, देन हमारा टैग क्लोज हो जाएगा I will टीएच। not use the Android Studio Editor, though अबाउट you के can बाद फिर नेक्स्ट absolutely हमारे do जो that. टैग आएगा There's यहाँ nothing पे, wrong with it. It's जो a fully ऑप्शन आप दे fledged सकते हो, IDE with the Flutter plugin. You गैलरी can का हम दे work in सकते it, हैं, and if you ठीक want है। to use that, you can follow गैलरी along का for भी the एक ऑप्शन entire रहता है course हमारा, with that IDE without problems. इमेज गैलरी है I'll जैसे, quit it though, because I have another IDE which I like more, and that's Visual Studio Code. You install it गैलरी from बनाना अभी मैंने आप लोगों को बताया codevisualstudio.com, नहीं, गैलरी and बनाने it's a का एक free प्रॉपर IDE, तरीका just टेबल के like थ्रू भी Android हम कर Studio. सकते हैं, It should वो भी मैं आपको automatically बताऊंगा। present you the right download स्टेप बाय option स्टेप for हम ये Mac. And you सब can चीजें simply, सीखेंगे, well, तब download जाके it हम then. एक प्रॉपर होम And पेज बना once you did पाएंगे। इसको download it, नॉर्मली you बनाना will मैं आपको have बता a दूंगा, file which you लेकिन can उसमें से लिंकिंग execute होती है and हमारी, which will ठीक है। walk you through the गैलरी installer. में The installation जैसे should be मैंने अगर pretty गैलरी में क्लिक किया तो straightforward. हमारे सामने There's गैलरी nothing खुल के आ जाएगी। special on it होम or में क्लिक nothing किया तो होम tricky पेज on में it. पहुंच जाऊंगा, अबाउट उसमें क्लिक Once you करूंगा did तो install Visual Studio, अबाउट आ you जाएगा, can इसलिए open it, हमने run आपको it, वेबसाइट and बनाई then है, in the starting उसके बारे में आ screen, जाएगा, simply choose Open Folder ठीक है। or choose तो इसके लिए जो File, ऑप्शन रहेंगे Open, यहाँ पे, to open your Flutter ठीक है। project. So that is what I'll do. बाद एक ऑप्शन Open that हमारा first app folder, फीडबैक का भी and रह this will सकता है now कि कई open वेबसाइट में Flutter उससे फीडबैक in, का ऑप्शन well, रहता है, that IDE. तो वहाँ पे फीडबैक फॉर्म Now, बन के आ जाएगा, I will actually ठीक है। use this IDE and also this look of the IDE, which is the एक dark ऑप्शन theme. हमारा You लास्ट आ can जाता है यहाँ change पे the look कॉन्टेक्ट का, under Code, Preferences, Color Theme. कॉन्टेक्ट अस कह But सकते I हो, आप will लिख सकते हो, install ठीक some है, extra या जनरली extensions कॉन्टेक्ट to भी लिखा जा make सकता है। working with Flutter a bit more pleasant. तो अब हम इसको सेव कर And लेते हैं यहाँ that पे, extension can be added by going to View, Extensions, or using that shortcut, or using that sidebar you ठीक है। will probably see here on the left. Extensions are simply add-ons to अच्छा, Visual सेव Studio करने Code, के which lets बाद us अब enhance यहाँ the पे फाइल का coding लिंक experience. पूछेगा हमसे, And there you should simply search for Flutter, तो इसका नाम रख find the लेते हैं official मेन्यू Flutter plugin or डॉट extension, मेन्यू click बार Install there, and this will also install the Dart डॉट एच टी, extension
as a dependency. Once you did install it, you ठीक है, फोल्डर can हमारा hit सेम है। reload to reload तो अभी release तक your हमने code इतना ही with सीखा है that इसमें। extension added. क्या किया हमने, There's नॉर्मली one अभी extra हमने यहाँ पे extension टैग I लगाया will use स्टार्टिंग throughout में the course, HTML, which is ठीक है, वो totally टैग तो हमारा optional, लास्ट में and क्लोज that's होगा, the पता ही है आपको। material icon हेड theme. सेक्शन Now हमने यहाँ that's पे not लगाया। related to हेड सेक्शन के Flutter, it अंदर जो just makes the टाइटल था icons हमारा, look जो nicer. हम बना रहे I हैं, वही already इसका got it टाइटल आएगा। installed. तो You हम can यहाँ पे अभी install it मेन्यू from बार this बनाना page. सीख रहे And हैं, once ठीक you है। did तो हमने लिख install दिया यहाँ पे मेन्यू that, but बार। more important, the Flutter उसके बाद theme, फिर यहाँ पे you can हमने बॉडी switch back सेक्शन to लगाया हुआ है, HR ठीक है। here बॉडी with के that अंदर shortcut or by clicking in the टेबल टैग। input अब menu. यहाँ पे जो You're मेन्यू back बार in मैं your आप लोगों को project बता रहा हूँ, structure, टेबल and टैग now को यहाँ you're से well बता रहा हूँ। prepared टेबल to टैग का work with यूज करके हम Flutter. यहाँ पे And for वर्ड example, बनाने जा रहे here हैं। in our main तो अब Dart टेबल बनाने file, के लिए हमें we कौन सा टैग can यूज करना होता है, manipulate टेबल our टैग, first ठीक app है। टेबल by, टैग for हमारा example, ओपन हुआ going है तो down to क्लोज the करना भी increment जरूरी होता है। counter method अब here टेबल के and अंदर जो changing मेन्यू that बार है, counter ये भी क्या है plus हमारा, plus एक रो thing के फॉर्म to में है counter एक्चुअली, ठीक equals है। ये भी क्या होती counter है हमारी, plus एक रो 2. होती है। This should now increase the counter by तो 2 रो on बनाने every के click. लिए आप लोगों Now को the पता very होगा cool टी thing आर is टैग हम वहाँ पे you यूज can करते hit हैं। तो टी आर save टैग मैंने here यहाँ पे स्टार्ट किया, and then go और back to टी आर your टैग मेरा वहाँ command पे क्लोज prompt हो where जाएगा you जहाँ ran पे मैंने Flutter रो run बनाना एंड कर and दिया है, simply hit R ठीक है। with जहाँ पे that मेरी रो एंड Flutter हो रही run है वहाँ पे process टी आर running. टैग So मेरा don't क्लोज हो quit it. जाता है। Hit R whilst it अब is रो के running and it एलिमेंट्स क्या will क्या होंगे, hot रो के reload your एलिमेंट्स Flutter दिखाने के app, लिए, which means अगर it वो will एलिमेंट reload हमारे it हेडिंग के on the फॉर्म में है, fly तो on मैंने the आपको बताया भी emulator था कि उसकी without जगह हम the टी एस need टैग to लगाते हैं, rebuild it. ठीक If है। that gets stuck somehow, you अगर can press हमारा जो Shift एलिमेंट R है वो for a कंटेंट के full फॉर्म में है, rebuild and तो reload, उसके लिए वहाँ पे still टी टी with टैग that लगाया जाता process है। running. टी एस टैग So और let's टी go टी back टैग to our app. है तो दोनों And सेम, it दोनों looks में like डिफरेंस nothing क्या है, बस changed. We अलाइनमेंट even का have the डिफरेंस old होता है, counter. ठीक है। But if we कि click एक का जो plus now, अलाइनमेंट है वो it सेंटर आ increases जाएगा by और 2. थोड़ा सा वो And बोल्ड that's फॉर्म में already होता showing है, how और cool it एक is का to जो work with अलाइनमेंट है वो Flutter, डिफॉल्ट how रहेगा easy it is to लेफ्ट, develop with ठीक it, है, with that और hard नॉर्मल फॉर्म में reloading. रहता है। And तो हमने this यहाँ all पे is the फाइल setup मेनी I ऑप्शंस will बना use दिए। throughout the टी एस टैग course. लगाया मैंने, And I उसके will बाद फिर teach रो you all लिखा, about फिर टी एस Flutter, टैग मेरा Dart, क्लोज हो and गया। some ये मेरा tricks पहला with एलिमेंट the था। IDE दूसरा throughout एलिमेंट this बनाने के course. लिए दोबारा Now से let's टी see एस how टैग that हमें works लगाना for होगा, Windows, अबाउट अस, or if that टी doesn't एस matter टैग to मेरा you क्लोज because you're होगा। using Mac थर्ड only. एलिमेंट बनाने के Let's लिए टी continue एस with टैग the दोबारा course लग and जाएगा, dive गैलरी पे deeper into यहाँ Flutter. क्लोज होगा। तो सेम प्रोसेस करनी है, जितने भी आप वहाँ पे मेनी ऑप्शंस बनाना चाह रहे हो उतने In the last एलिमेंट्स यहाँ video, पे we आपको इंसर्ट installed करने पड़ेंगे, Flutter टी एस for टैग Mac. आपको Now, उतनी if बार you're लगानी using पड़ेगी। Windows, let's now ये करने install के it for बाद फाइल Windows को हमने 2. सेव कर If you're लिया था, using Mac ठीक है। only, you अब can हम चेक therefore कर skip लेते हैं this कि video. हमारी टेबल So, या to हमारा जो install मेन्यू बार Flutter है on वो किस Windows, फॉर्म में first of दिखा रहा all, है। let's visit flutter.io, तब स्टेप बाय click स्टेप हम on क्या Get करेंगे, उसको Started अपने there, मेन्यू बार and को then choose सही Install करेंगे, on ठीक Windows. है। There you will see all the तो installation मेन्यू बार के steps लिए in हमने लिखा detail, था and मेन्यू I बार डॉट strongly एचटीएमएल। recommend also going इसको हम through ओपन these कर लेते step हैं, by ओपन step विथ along with the video. कॉपीराइट नाम का Because, ब्राउज़र, for ठीक है। one, they can change in तो ये one or हमारा the other मेन्यू बार है, detail in the ठीक है। future, and एक then this प्रॉपर is फॉर्म में great नहीं लग रहा to है जिस तरह see से or easy प्रॉपर to फॉर्म see in में that मेन्यू written बार form. आता है किसी And भी वेबसाइट के additionally, अंदर it's आपने easy देखा to होगा, miss a उस step, फॉर्म में नहीं and आ रहा therefore, है, this is a ठीक great है। companion for तो this उसको video. प्रॉपर बनाने के लिए So अब first हमें of क्या all, करना let's have a होगा, look at आगे the फर्दर system सेटिंग्स करनी requirements. होगी We या install Flutter प्रॉपर्टीज on लगानी our होगी, machine. We ठीक है। need Windows सेटिंग्स का मतलब 7 यहाँ or पे क्या होगा कि higher, उसकी the disk रिलेटेड जो space, which प्रॉपर्टी is है mentioned here, वो, and ये important, सारी one प्रॉपर्टी of हमें these यहाँ पे two लगानी है। tools, PowerShell or Git for तो Windows. एक तरीका तो Now, ये Git है is a कि हम versioning टेबल का system, and even if you बैकग्राउंड don't use कलर it दे सकते हैं, actively, ठीक Flutter है, does use it. बिजी So कलर here, I'll install Git for इक्वल्स टू। Windows by clicking अच्छा, on that कलर link. लेने का एक तरीका मैंने आप लोगों को Then लास्ट we टाइम बताया have the था chance कि to अगर download आपको that एक Git प्रॉपर और tool डिसेंट from सा that एक Git कलर आपको page here. रिक्वायर्ड होता है It should वेबसाइट के लिए, automatically give you the तो right आप क्या कर download सकते for हो, your एक ऑप्शन machine, आता है हेक्स कलर download it, पिकर, and then ठीक है। walk यहाँ through से the आप कलर ले installer. सकते हैं, Now, in the हेक्स कलर installer, पिकर, you can choose the place where you यहाँ want से to आप सारे install कलर उठा Git. सकते हो, Then जो भी कलर simply hit आपको next चाहिए, and, ठीक है। well, install that tool. Now, very important, you click next a couple
couple of times, and most of the default settings are fine. One important thing to note is that थोड़ा on सा टाइम this ले रहा है screen बट here, मिल जाएगा तो हम you वहाँ से should कलर use अच्छा git कलर from बनाने the का एक Windows तरीका और command होता है prompt. ये भी मैं आप Don't लोगों को use बता one of देता the हूँ other two options. बीजी Use कलर the middle इक्वल्स one टू here. एक This मैंने is आप also लोगों से बोला mentioned था in कि the आर official जी बी docs. फॉर्मेट होता है Now with that, आर जी hit बी का next फुल a फॉर्म couple हो of गया times and रेड leave all the ग्रीन other ब्लू defaults. ठीक है And with all that, simply hit तो उसकी जो रेंज excellent होती last है time, and 0 it से will install 255 Git on your जैसे machine. मैंने आप लोगों With को that, बताया you're था कि fine. You आईपी can एड्रेस now की भी रेंज close this हमारी and वही होती है continue 0 से in the setup. 255 एक्चुअल में सिस्टम के अंदर या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप ज़्यादातर रेंजेस आप देखोगे या किसी टेक्स्ट की रेंज हो किसी पैराग्राफ की रेंज हो ठीक है या फिर अगर हम जैसे देखें कि यहाँ पे आरजीबी फॉर्मेट हम फॉलो करें उसकी रेंज है आईपी एड्रेस की रेंज है ज़्यादातर रेंजेस हमारी 0 से 255 के बीच में ही रहती है एक्सेल वगैरह में भी आप लोगों को कई बार मैंने बताया था कि ऐसे हम सम फॉर्मूला बना वहाँ पे फाइंड कर रहे हैं Setup या कोई अदर instructions. फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं तो 0 से 255 मतलब 256 नंबर का सम हम फाइंड कर सकते The थे next step is to तो actually ज़्यादातर install रेंज Flutter हमारी यही चलती SDK, है which you ठीक can है get from तो this पहली download रेंज link हमारी here.
Now, importantly, राइट के the लिए आएगी, version of जैसे Flutter, हमने of यहाँ दे course, दिया will change in the 200, future. Right now, कॉमा it's दूसरी रेंज आएगी 0.3.2.beta. हमारी ग्रीन It's के लिए, production ready इसमें दे दिया already, मैंने and 50. the code you learn थर्ड in this रेंज course आएगी will हमारी still be all correct in the ब्लू के लिए, future, even इसमें if मैंने you दे are दिया सपोज downloading a different version. 150. But make sure to download ठीक the है, version you're seeing तो here. फर्स्ट वैल्यू So रेड को whatever डिनोट करेगी, version that is for दूसरा you. ग्रीन हो गया, थर्ड हमारा So ब्लू हो this will गया. now अगर मैं also इसको be एज इट इज downloaded. ऐसे ही Will take a सेव कर couple of दूं seconds तो since कोई it's ना कोई quite a कलर big file. कॉम्बिनेशन बना के हमें वहाँ पे And वो once it is दिखा देगा. downloaded, you can ठीक है, extract this folder यहीं पे हमारी फाइल है, into तो the रिफ्रेश कर place where लेते हैं you want F5 to से. install that तो Flutter यहाँ पे tool. इसने Now, ब्लैक कलर importantly, बनाया है, the ब्लैक Flutter टाइप का ही है, tool ठीक है, is एकदम not परफेक्ट your ब्लैक तो नहीं कह सकते project हैं, for your mobile app. और वो डिपेंड It's करता a है कि इस टाइप का कलर SDK, हम a बनाना चाह रहे हैं software यहाँ पे, development kit, उसकी which you कलर install कोडिंग हमें पता globally होनी on चाहिए. your machine ठीक है, and सपोज which मान you will लीजिए कि use कोई from कलर कोड आप different यहाँ से places बनाना on चाह your रहे हो, machine जैसे to यही कलर है, create आप ये बनाना new चाह रहे हो, तो Flutter इसका कोड क्या projects दिखा रहा है, and to 235, work with the ones you 64, created. So to 52. build them, ठीक to है, run them on तो an ये कलर कोड emulator, हमें वहाँ पे things लिख like देना that. होगा. ठीक है, क्या था 2. So unzip Flutter into that directory, and once you unzipped it, you can go into that directory, and in my case here, I'll also move all the files up one folder so that they're all directly in the Flutter folder. And then you can execute that flutter console.bat file here. Now this will open up a command prompt which already uses Flutter. And you could stop here and continue with the Flutter commands and with bringing up your Android emulator and so on, and always open that tool here to run the Flutter commands which you need to run or build your app. However, I want to be able to use the normal command prompt. So let's close the Flutter console here. And let's move on and make sure that we can use the Flutter commands from the normal Windows command prompt. For that, we'll need to update our path. Now, the path, that simply is a global variable which Windows uses to find the tools we can use from the command line. And since we picked a custom folder where we installed Flutter, or where we unpacked it to, we need to make Windows aware of where that is. You do that by opening your control panel and then going to user accounts, and there simply click on change my environment variables. Now in the window which opens, you should find a path entry which you can select and where you then can click edit. Now here you can add new locations of tools you want to be able to execute to that path by clicking on new here. And then here you need to enter the path to your Flutter folder, so the folder you unpacked. Yes, sir. Simply go into your Windows Explorer, and there navigate into the bin subfolder, to be precise. That is what you need. Copy the path to that bin subfolder and add it to your path variable by clicking new, adding it to that empty blank space which opens up, and thereafter hitting OK. Now you're prepared to run Flutter commands from the normal command prompt. Click OK and make sure to close any command prompts you might have opened already. Restart Windows if you're facing issues thereafter. And once you did all that, you can bring up the normal command prompt and simply enter Flutter there. Now, this might show you a warning regarding the installation being a bit older. You can ignore that because we actually did just install the latest version, so that will be alright. But the fact that you're seeing this and not something like Flutter not recognized means that we did successfully add it to our path and that we can use अच्छा that स्क्रीन आ रही है Flutter आप लोगों के command line सामने. tool from our command prompt. Now, Flutter is now available. The next step we have to do is we have to set up अच्छा Android मैंने कहाँ तक Studio. आप लोगों को बता दिया This था, is the official ये फॉर्मेट तो SDK मैंने पहले ही provided बता by दिया था. Google,
उसमें कोई for दिक्कत तो नहीं building Android चाहिए हो। apps, and whilst हमने we यहाँ will पे not बनाया हुआ write है, native आप code देख with लो कि it, इसके अंदर it हमने यहाँ पे includes all एक the टेबल बनाई SDKs है, and उस build टेबल के tools अंदर कुछ Flutter एलिमेंट्स will हमने need यहाँ पे too. बनाए हुए हैं, एक रो So बनाई है simply हमने। go to अब सिंपली आपको ऐसे पता होगा कि developer.android.com/studio हमारा or जो use the link you मेन्यू बार find है in the ये Flutter क्या होता है, एक installation रो के फॉर्म में documentation होता है, ठीक and है। download the Android और Studio कई version there. वेबसाइट्स It में should मेन्यू बार automatically give हमारा you the right वर्टिकल version फॉर्म for में भी your होता है, operating system. ठीक है। वर्टिकल You वाला need to जो accept the हमारा agreement before you मेन्यू बार है can होता है, उससे continue. बहुत कम यूज And किया with जाता है, वो that, the ज़्यादातर हमारा download will हॉरिजॉन्टल start, फॉर्म में and मेन्यू it बार will होता also है। take a तो while उसके since लिए it's तब हमने also यहाँ पे quite a टेबल big टैग का यूज़ किया download. हुआ है, So ठीक है। let me fast टेबल forward में to the जैसे आप point देख where लेंगे this यहाँ is पे मैंने done. टेबल टैग यूज किया, उसके Now, बाद फिर once the tr download did टेबल finish, की रो simply बनाने के लिए, execute the ठीक है। executable उसके you अंदर got, के एलिमेंट्स and अगर the हमने install दिखाने हैं will start. तो So हमने there you can ts टैग का continue. भी यूज किया हुआ है। Make sure आप चाहो तो उसकी जगह td का भी choose यूज कर सकते Android हैं, virtual ठीक है। device वो डिपेंड as a करता है कि हम component you वहाँ want पे to install though. tr That's यूज कर important रहे that हैं, you td take यूज कर that. रहे हैं, सॉरी Thereafter, td you यूज can कर choose रहे the हैं या ts location टैग where you यूज कर want to रहे हैं, ठीक install है। वो डिपेंड Android करता है, Studio, and you can use the default क्योंकि here or दोनों में pick your डिफरेंस own क्या है, location on your machine, अलाइनमेंट का डिफरेंस and रहता then है, you can ठीक है। simply hit ts टैग next. का हमारा जो Now this will again take अलाइनमेंट a होता couple है of seconds. डिफॉल्ट, वो क्या रहता है, सेंटर, Once it's और td done, का you लेफ्ट can रहता है। start the Android अच्छा, Studio, इसके बाद फिर मैं यहाँ and पे for the first time you start it, फाइल a को मैंने सेव wizard कर लिया will था, come up, ठीक which है। अभी allows पता you to नहीं आप लोगों ने configure it. देखा या नहीं देखा, तो फाइल Now सेव in करने that का मेथड wizard, मैंने आप लोगों को hit पहले ही बताया था। next, क्या and then करना होता है choose जब फाइल को सेव custom करना here. होता है, तो फाइल का नेम And the next step is और that you डॉट can choose your html उसमें UI लगाना है view. यूजिंग, Now that's mostly ठीक important है। if you want to तो ये use हमने वहाँ Android पे कर Studio दिया to था। build इसके your बाद Flutter apps, फिर which you can. However, I फिर will में use a फाइल हमारी different किस फॉर्म में दिख IDE रही in है, this course, and I ठीक है। will go with तो the मैं dark आपको theme चेक here, करवा but देता of हूँ course you ब्राउजर can में choose फाइल your हमारी favorite look. किस फॉर्म में दिख रही है, In the इस next फाइल में, step, it's important ठीक that है। you check Android ऐसे क्यों दिख Virtual रही है, क्योंकि Device मैंने that यहाँ पे this इसमें एक option is बैकग्राउंड कलर ticked, अप्लाई किया because we हुआ है, will need to be able to ठीक bring है। up such virtual बैकग्राउंड कलर devices. अप्लाई करने का With that एक और tick, तरीका मैंने बताया था, choose शायद वो your नेम Android डिफरेंट हो SDK गया। location, एक तरीका और होता default है will आरजीबी be turned फॉर्मेट, एक off, मैं आप लोगों से and कह रहा था thereafter कि यहाँ पे हमारा simply ये hit आरजीबी फॉर्मेट next. होता है, ठीक है। अब ये जो आरजीबी फॉर्मेट है ये Now, होता this क्या है, will install a couple of things, and ये you किसको can डिनोट start the करता है, installation by hitting रेड finish here. ग्रीन और This will ब्लू को, actually take ठीक है। quite long because it रेड ग्रीन downloads and और ब्लू, installs a lot of packages. तो So एक हमें don't रेड worry की if वैल्यू this देनी takes a होगी, एक couple of हमें ग्रीन minutes, की वैल्यू maybe देनी even होगी, 20 एक minutes or हमें ब्लू something की like वैल्यू this. देनी And होगी। I तो क्या will करेगा, be अपने back once कलर it's done for कॉम्बिनेशन के me. अकॉर्डिंग एक कलर बना के Once the हमें वहाँ पे दे installation did देगा, finish, ठीक you है। can, well, close the installer तो इसकी रेंज and then एक्चुअल bring में up आपको ये Android पता होना Studio चाहिए कि again. इसकी रेंज होती क्या है। Now here, you can इसकी जो open an रेंज है हमारी existing Android Studio से project, which would be your Flutter app ठीक you're working on, but we टी don't have such an app yet. कॉमा So our next step actually is to create such an app. However, we will need an emulator to view it. So let's make sure we fulfill all requirements for that. You can see them here in the official docs. And by the way, if you want to install your app on a real device, that is something we'll also do later in the course. And you can, of course, already go through the steps you see here if that's important to you right now already. But again, we'll do this together later in the course. For the majority of the course, we will work on the emulator though. So, there on the emulator, you see that it's important that we have hardware acceleration enabled on our machine. Click that link to learn more about it and see how to turn it on. And thereafter, we can go back to Android Studio, and now we need that Flutter project to continue. So, back to the command prompt. There, you should now navigate into the folder where you want to create your new Flutter project. You can navigate around in Windows with the cd command to change the directory you're in the command prompt. Now make sure to create a folder and navigate into that folder where you want to store your Flutter app. And once you're in that folder, you can create a new Flutter application and project by running flutter create and then the name of your project. Now, important, that name must not contain a dash or semicolon, also not a white space. फिर हमने यहाँ पे Words ग्रीन should की be वैल्यू देनी separate होगी, with underscores और or use फाइनली फिर हमने semicolons यहाँ पे or ब्लू की वैल्यू only. देनी। So अच्छा, इसकी Flutter रेंज की create बात first बता देता हूँ underscore आप लोगों app को, is इसकी my रेंज command कितनी here to होती है, create this इसकी project. रेंज होती है And now 0 this will से add a new folder 255। in the location you're in the command prompt and जैसा आपने configure देखा your होगा, मैंने एक first आईपी Flutter एड्रेस की रेंज project आपको in बताई there. थी, क्या As you रेंज can होती see, थी it आईपी creates a एड्रेस की couple of हमारी, files. And once it's done याद with है आप all लोगों that, को? you can open the project in Android Studio by आईपी clicking एड्रेस की on रेंज बताई थी Open an आप लोगों existing को, Android Studio project. किसी को याद है तो And बताइए। there, you should navigate to that folder you just created
and open it नहीं there है यार in the फिर Flutter 24 folder in my मिनट case. So 0.0.0 basically open that अच्छा project you just created, first कितना underscore app in my case. 24 This will open it in Android yes Studio. sir And 24 तो before we नहीं था do 32 anything there, let's bring up ठीक that है virtual device. तो इसका थोड़ा सा You याद can do that रखना पड़ेगा by, फिर आप लोगों को in दिक्कत Android आएगी नहीं Studio, कैसे going to Tools, अच्छा and सेम then ऐसे ही AVD रेंज आप देख Manager, लोगे हमारे which यहाँ पे भी stands है for 0 से Android लेके Virtual Device 255 Manager. तो 0 And in the window, which then opens up, you can start a new virtual device by clicking onto किया एक Create कलर बना Virtual के हमने यहाँ Device. पे देख You लिया should also have one ठीक by है जैसे आप default, देख which रहे you होंगे can यहाँ use, पे but ग्रीन let कलर me आ show you how गया to create a new बैकग्राउंड one. में अगर There आप you कोई choose दूसरा your कलर footprint. लेना You चाह रहे basically हैं बनाना are चाह in the रहे हैं general तो hardware तरीका and बताया layout था profile. हमें गूगल में I'll क्या go टाइप करना with होगा हैच X2 कलर here. पिकर On the और एक next कलर यहाँ screen, पे you choose the एक image, कलर पिकर the आपको मिल Android जाएगा version you want to use. And ठीक I है recommend not जो going भी with the कलर आप यहाँ cut-in पे edge बनाना चाह रहे version, हैं but जिस तरह using का the कलर आप latest बनाना चाहते stable हो version. In my case, तो उसका Oreo हैच कोड आपको यहाँ API पे मिल जाएगा 27. ठीक है Typically, that's the one which is selected by default. देखते हैं कोई कलर Hit यहाँ पे मिल next जाए हमें again. Now on the next screen, make sure to choose hardware acceleration from the graphics drop down there. And you can have a look at the advanced settings, but you typically ठीक है don't तो need हम to यहाँ पे ये change कलर ले these. रहे हैं इसका कलर कोड And क्या with है that all done, हैज you ए can डी वन finish that थ्री वन and डी create that new ठीक है virtual device. तो इसको हमें क्या करना होगा यहाँ पे कॉपी Now करना with होगा it created, you can कॉपी करने start के it by बाद clicking on that आपको कहाँ blade जाना button होगा on the फिर right. And कोडिंग this में will जाना होगा open the virtual और device RGB लिखा हुआ on पूरा your हटा देना होगा ये screen. हमारा एक Bring अलग up तरीका है Android phone ठीक है on your कई बार क्या machine, होता so है to अगर मैं say. RGB फॉर्मेट इसका लिख देता हूँ Now, with that running, ठीक we है जैसे आप can't देख रहे run होंगे ये हमारा our RGB Flutter फॉर्मेट app है क्या yet वैल्यू है इसकी because we still need to do some 173 things. वन For नाइन one, we need to टू नाइन install the ठीक है missing अगर मैं यहाँ dependencies, पे the लिखता हूँ missing मान लीजिए plugins. RGB For that, click on Install Plugins 179 here at the top where it tells you about the 173 missing Dart 173 plugin. You could, by the way, also skip 19,29 this if you ठीक already है installed the Flutter कॉमा plugin, but here I do it in two 29 separate steps. So install that तो Dart ये हमारा plugin. कौन सा फॉर्मेट है RGB फॉर्मेट Once ठीक the है installer तो is चेक done, करते you हैं कि need to हमारा सेम restart कलर यहाँ पे Android दिख रहा है Studio. नहीं दिख रहा है And once you restart it, अब you देखिए कौन should सा कलर दिखा actually रहा है यहाँ पे get a हमें message here ग्रीन कलर दिखा रहा है at the bottom जो where it एक suggests परफेक्ट you a new कॉम्बिनेशन वहाँ पे plugin. बनना चाहिए था वो Expand that कॉम्बिनेशन यहाँ message पे and नहीं click on बना Configure ठीक है Plugins. तो इसके लिए And तो हमें there, क्या करना it will होगा suggest the इसका जो Flutter हेक्स plugin. कोड होता है Simply ये accept this हमें by कॉपी clicking करना होगा OK, and now it will install the इसको Flutter कॉपी आप plugin यहाँ too, पे पेस्ट and कर that दीजिए would have installed the ठीक है Dart सेव plugin कर with it, लीजिए सेव so करने you के can बाद actually do that with अगर one हम यहाँ step पे only. रिफ्रेश करेंगे And once this is done, तो you need हमें to वो पर्टिकुलर restart the कलर मिल IDE जाएगा one या more time. रिक्वायर्ड कलर मिल जाएगा So जो let's हम do that. चाहते हैं Let's restart the ठीक IDE है again. तो आप देख होंगे हमारे यहाँ पे वो कलर आ गया And तो now इतना we समझ में आया have आपको यहाँ पे Android कलर हमने Studio कैसे बनाना है configured या to कलर support हम Flutter. सिलेक्शन कैसे करेंगे Now, we कहाँ से हम still कलर don't बना के see ले our सकते हैं emulator here ठीक है at the top, अगर and हम therefore ऑनलाइन we वर्क कर still रहे हैं या can't नेट की start our कनेक्टिविटी है तो application. हेक्स कलर पिकर Let's से quit the आप वहाँ पे emulator for कलर ले now. सकते हैं ठीक है And क्योंकि to एक make it पर्टिकुलर work, हेक्स कोड first वहाँ of पे all, आपको go मिल back जाता to है the setup वो instructions and कोड make आप sure to अप्लाई कर देंगे install और that Google एग्जैक्टली USB आपको वही driver. कलर Now, मिल that जाएगा should जैसा only कलर be वहाँ पे दिखा important रहा for है running it on a real device, कितना क्लियर but हुआ it still doesn't hurt to set अब it up हमें क्या करना already होगा so that इसको it थोड़ा will सा work और अच्छा later. बनाने के लिए या So दिखाने के click लिए on that link you अब see देखिए there हमारे and मेन्यू बार install है the USB तो क्या ये driver. You प्रॉपर दिख रहा can है do क्या that उतना from अच्छा आपको within दिख रहा है Android मेन्यू बार Studio by नहीं going दिख रहा back है into it. ठीक है उतना And सही नहीं there लग रहा है go to लुक वाइज Tools, तो एक काम और SDK कर सकते हैं Manager, इसकी हाइट और and in विड्थ the हम बढ़ा SDK सकते हैं Manager, go to ठीक है SDK तो Tools क्या करना होगा and इसके लिए choose हमें a यहाँ पे USB driver इसकी there. विड्थ Hit को OK बढ़ाना होगा thereafter or apply टेबल की and विड्थ हम बढ़ा install it. देंगे इसको रख देंगे हम यहाँ पे You also need to accept the 100% license agreements there. 100% Now, रखने का with रीजन it क्या है वो installed, मैं आपको ही you will बताऊंगा need ठीक है to also do और one more हाइट thing. जितना भी आप If यहाँ you पे देना चाह रहे हो installed सपोज your मैं हाइट दे दूँ Android यहाँ पे इसकी SDK 50 in a ठीक है different place on न्यूमेरिक your वैल्यू को operating अगर आप system than the इन्वर्टेड one कॉमा के अंदर suggested नहीं भी during the wizard, रखते हैं तो कोई which फर्क नहीं I पड़ता did. बट अगर You आप need रख to रहे हैं add वैल्यू one को तो other ज़्यादा environment अच्छा है variable. वो बेटर You ऑप्शन can रहता है also ठीक see है that if you go back to the तो command सेव कर prompt लेते हैं and run फाइल को flutter doctor और सेव o2, करने के which बाद tells you अब what's इसको missing. रिफ्रेश कर लेते हैं Here it tells me that तो it's आपको unable मेन्यू to बार इस locate फॉर्म the में Android दिखेगा SDK. ठीक And है therefore, तो अब I क्या would थोड़ा go मेन्यू back बार to आपको सही my लग रहा home है panel, सही दिख रहा है and आपको there मेन्यू बार to user accounts
and then change my देख रहा है ना, environment लग रहा variables. है कि But मेन्यू बार first of है। all, we need to add a brand new variable. So click चेंज new करना here, है, जो आप देख रहे and होंगे कि then इसका name that variable. And the कलर name है, is important. आप चेंज Android करना चाह रहे underscore हैं home, तो क्या all करना होगा, uppercase. Make sure to not add बताइए a typo here. कौन सा टैग लगाएंगे, या क्या Now, करना होगा with हमें। that name defined, you need to define a ये value, लास्ट टाइम आपने and मुझे that बताया भी था, simply is
a path pointing to the Android SDK. इसके लिए You हमें can click फॉन्ट Browse टैग लगाना Directory है। here to choose the Android SDK कलर location, टैग नहीं होता, and फॉन्ट there टैग। simply choose कलर the तो प्रॉपर्टी location होती you है, selected during तो हमें the करना होगा wizard or फॉन्ट in टैग the लगाना wizard होगा which और opened उसके or अंदर which एक ran when प्रॉपर्टी you आएगी opened हमारी Android कलर, Studio. In my ठीक case, है। it's the तो Android कलर folder. हम यहाँ पे It देते should हैं be this वाइट, folder which has क्योंकि a होता क्या है कि platforms, ये जो कलर emulator, हमने and यहाँ so पे on दिया है इस कलर subfolder. कॉम्बिनेशन में वाइट Simply hit कलर ही OK ज़्यादा with the root सूटेबल folder होता है, selected. And now you also need ठीक to है। add something to your और path साइज variable. आप देख So सकते हो select यहाँ that पे again and click 4, on Edit. And there you ठीक है। need to add two और new entries. ठीक है, नहीं तो The फेस की first जरूरत है one नहीं यहाँ पे, should be इसी को हम percentage कॉपी कर लेते sign हैं, and then ठीक है। Android home. So कॉपी that करके हम variable यहाँ name पे we इसको just हर जगह created, अप्लाई कर देंगे, written exactly in the same way. And then another percentage लेकिन sign, ये \tools. And then you need to add हो one गया। other entry, which is अब जहाँ पे also हमने मेन्यू लिखा percentage है, मेन्यू sign के बाद Android क्या होगा, home जस्ट फॉन्ट टैग हमारा क्लोज हो जाएगा, \platform tools. Make क्योंकि sure it's फॉन्ट टैग written अगर ओपन exactly किया है as तो you क्लोज see करना here भी in the जरूरी है, video. ठीक है। Now, with अबाउट that उसके added, बाद hit फॉन्ट टैग OK बंद हो and जाएगा, restart ऐसी the गैलरी से command पहले prompt. फॉन्ट टैग लगा है तो And now गैलरी के also बाद restart फॉन्ट your टैग हमारा virtual device बंद हो by जाएगा। quitting it, ऐसे ही potentially फीडबैक से wiping पहले the फॉन्ट टैग user हमारा data ओपन हुआ if था, you're facing issues ठीक है। when starting it, तो and then फीडबैक के hitting the बाद green हमारा play फॉन्ट button टैग again. बंद This हो will bring जाएगा, up the emulator यहाँ again. पे लास्ट हमारा And कॉन्टेक्ट से now you पहले should see it here in the drop down selected. टैग लगा था तो कॉन्टेक्ट किया तो And कॉन्टेक्ट now you can बंद हो press जाएगा, that run ठीक हो button गया। to run your Flutter app on that virtual device. फिर कर देते हैं। Now, this build process, which will start it अब on the हमारा device, यहाँ can take a फॉर्म couple में of दिखा minutes when you run it the first time. Don't worry about that. And और once ये it's done, बात you should see your Flutter app running on हम that emulator. And you can hit कहना the चाह रहे plus button here हैं to increment the कि counter. Pretty awesome. वैसे Our का नहीं Flutter है, app finally running ये तो on an बनाने का emulator. तरीका And हमारा of होता course, है, we'll change this इसको app थोड़ा सा soon. और कस्टमाइज करना है Now, as I mentioned, या I इक्वल फॉर्म won't में लेके use आना है तो उसके लिए Android एक काम Studio और कर सकते as an हैं। editor here. And जहाँ पे therefore, हमने टीयर I टैग also लगाया want है to वहाँ show पे you a way of running इसकी this विड्थ आप without डिफाइन Android कर Studio. सकते हैं, You ठीक can है। do that by उसकी going to the विड्थ आप दे command सकते हैं, prompt, सपोज मैंने विड्थ दे दी navigating यहाँ into पे the folder where you 250, have your first app क्या or करना into होगा, this विड्थ project you लगानी होगी created. 250 And in सबको there, इक्वल you can दिखाने run के लिए, Flutter run. And ठीक this है। will now do सबको the exact same as you did with the command बनाएगा inside or with the कि click जो of the button inside Android Studio, but without you doing it through Android Studio. It will जो build मेरा the app वो and मैं ship it to your विड्थ emulator and run it there. And this पूरी is विड्थ actually how I will run my apps for the rest ये of this course, since I won't use Android Studio. क्लियर। You can use either अब मुझे approach, ऐसा however, using Flutter Run will have advantages like the hot बनाया हुआ reloading I'll है, वहाँ पे introduce in a हमें एक second. विड्थ प्रॉपर्टी लगा देनी होगी, तो क्या करेगा, Now, उसको which साइड में ले editor लेगा, will I use तो then? एक I will use अब Visual देखिए Studio आप Code. कुछ You can get it from लाइन में दिख रही है क्योंकि code.visualstudio.com. हमने It's a टेबल की free लाइन को डीएक्टिव IDE किया हुआ है, which हमने टेबल की also रूल has an एक्टिव नहीं extension करी that हुई। provides awesome Flutter हाँ support. बताओ, You can download it from that page and अरे automatically बताओ, download the right version for your operating system. And you can simply walk through the installer. It's pretty straightforward, nothing special about it. Simply install the IDE on your machine. Now, once you did install it in your favorite location, you can start it. And in the IDE, you can then इसमें तो click आपकी कुछ Open जैसे कलर Folder क्या होता है ना, or परसेंटेज choose में the अगर किसी Open वैल्यू को option मैं ले from रहा the हूँ file menu in तो the top उसमें left बड़ा corner. चेंज आता है, And परसेंटेज में अगर simply आपको choose वैल्यू that देते हो तो first उसमें बड़ा underscore चेंज आता app है, folder ठीक you है। created. अगर आप Now, this नॉर्मल is your वैल्यू वहाँ पे लिख Flutter रहे हो app. तो उसको क्या And लेता है, in पिक्सल order to लेता be है, able to तो work with पिक्सल that के अकॉर्डिंग really अगर आप well, चेंज करते हो तो we उसमें should add a छोटा चेंज so-called आता है। extension. अब So मुझे by यहाँ in, पे we can टेबल add की जो to हाइट that थी IDE बहुत ज़्यादा to नहीं add थी, extra अब की हाइट functionalities. वॉल्यूम You बड़ा can हुआ install तो फिर तो extensions by मेन्यू बार clicking जैसा on लगेगा this ही नहीं, icon on the left बहुत अजीब सा or लगेगा ना, बहुत ऑड selecting लगेगा। View तो Extensions प्रॉपर एक मेन्यू बार की फॉर्म in में the menu दिखाना at the है तो top. फिर हमें क्या करना And पड़ेगा there वहाँ simply पे, search for उसमें Flutter. हाइट को Install that आपको extension क्या you देना find होगा, here. पिक्सल में देना It's होगा। the official अगर मैं Flutter इसको extension. 50% कर दूँ And तो वो we'll क्या also करेगा, install पूरी the स्क्रीन Dart मेरी वहाँ पे extension रिजेक्ट कर together देगा, with it ये because that will 50% be a होगी। dependency. तो अगर And ऐसा once it मेन्यू is बार होगा installed, तो you देखने में just अजीब need सा to लगेगा, restart the ठीक है। IDE तो to have इसीलिए that यहाँ पे installed. आपको ध्यान रखना होगा कि Now I मेन्यू will बार use one की extra हाइट, extension विड्थ from जो the भी आप course, देना चाह and रहे हो, that's the material कितना icon theme चौड़ा that आपने is उसको not करना है, related to कितनी आपने Flutter विड्थ देनी development. है, I just like the उसके icon अकॉर्डिंग look आप I वहाँ get with it. परसेंटेज में और It's पिक्सल में totally वैल्यू को दे optional. सकते I हैं, just want to show it here ठीक है। so that you don't wonder क्लियर हुआ why इतना? my icons look different than the तो एक
बात तो हमने यहाँ पे क्या किया Once एक you install that, if you हाँ want it, बताओ you again can reload सर the जो हमने IDE. टेबल में जो And विड्थ लगाई with ना, that, we can finally make a change to हम्म our
Flutter code. उससे So I उससे अगर उस पे actually उसकी width बढ़ी थी you can तो see फिर your ये Flutter width code in से the क्या lib बढ़ा? folder of the project you opened, and there in the main.dart कैसे वेट से file, बढ़ेगी you see मतलब the code which is जैसे responsible हमने for टेबल what is बीजी currently वाला running जो on the टैग यूज emulator. किया था ना, There, search the increment counter, the underscore और increment वहीं पे counter होता था तो फिर method, width बढ़ती थी. and in set state, change underscore counter plus उसने plus 100% to लिखी तो पूरी underscore across the counter screen equals ना वो. underscore counter plus 2. This should ensure that we actually increase the Hello. counter by 2 every time we hit the plus, not by 1 anymore. With that change made, go back to the command सर prompt आपकी आवाज कट रही है. and make sure that the Flutter run process is still running. Don't quit it. सर You वही मैं could keh रही हूँ ना quit कि it इस later पे on width after में जब speed, but as 100 long as बढ़ी you थी are तो developing, you should keep it running, because then you can hit R with that process running to hot आपकी reload the आवाज app, वहाँ से कट जा which रही है means वहाँ से एक the बार changes you डिस्कनेक्ट added करके are कनेक्ट करना pushed था एक into बार the app without the आपकी need भी for आवाज it वहाँ से to थोड़ा कट हो जा rebuild. रही है Now, sometimes this fails. Then you can press Shift R to do a full reload and a full rebuild. And you can quit that process with Control C if you're done हाँ with बताइए development for the जैसे day. टेबल की वेट की बात So कर I रहे थे ना pressed R. हाँ सर जो If I जैसे go हमने back से या to हाइट तो नहीं my कहता emulator here, you can see नहीं नहीं सर जैसे that जो I टैग यूज can किया now था increment टैग by जो 2 किया था हमने, instead of 1. And this is जहाँ our पे हमने first 100% change. लिखा था We तो will वो do पूरा much across more, the of course, screen but this is में our हो गया Windows था setup पूरा here. टेबल. Was quite a lot of work, but now we are prepared to continue and dive तो much फिर ये जो deeper तो नीचे 100 वाली into टीचर Flutter. है ना थी जैसे We set up ये our वेट अलग है environment and we कौन सी created वेट टेबल अलग की as वेट से our पूरी very वेट first क्या हुआ Flutter कि app. Now, before we dive टेबल way की वेट deeper से जो into है that ये in पूरी the टेबल की next वेट है आप module देख लो कि and the जब हमने टेबल modules में वेट thereafter, लगाई थी let तो me पूरा briefly स्प्रेड हो talk गई थी about टेबल some पूरी alternatives. स्क्रीन में Flutter is, of course, ठीक not है the only way और जो of हम यहाँ creating पे native mobile apps. There are three alternatives I want to discuss. The first one is that कि you टीयर write टेबल क्या real करता है native हमारा apps सेल by बनाता है ना learning Java and Android हेलो and Swift Objective-C ये for सेल the की वेट है respective हमारी platforms. आप देख रहे हो कि जो ये The होल है advantage हमारा of ये this is क्या है एक that you सेल है got full अबाउट access अस to क्या है all एक सेल है features and you don't गैलरी need to भी एक worry सेल है about अलग अलग सेल्स finding हैं some तो workarounds सेल की to वेट हम get जा रहे that हैं कि feature इक्वल to हो जाए work in उसके your लिए app. सब हमने यहाँ The पे huge टीयर में downside is वेट that प्रॉपर्टी लगाई you है have to learn two सर completely ये हाइट different वाले का नहीं क्लियर पता. languages, हुआ and that takes a lot of time and possibly also money. नहीं So हाइट this बढ़ेगा is हाइट a तो huge downside. की And हाइट है ना Flutter can actually हाइट get आप पूरी you देखो to हाइट the तो same वर्टिकली result. बढ़ेगी So not the best alternative हम maybe, वेट की बात except कर for रहे हैं cases वेट where you have a very एक specialized app where जो you एक absolutely need सेल that की वेट latest थी cutting edge feature and you would तो मैं end आपको up writing a समझाता हूँ lot of किससे native code anyways, because you can connect Flutter बॉर्डर with native code. But we'll cover that in the course. So an अगर मैं यहाँ पे alternative, लिख दूँ बॉर्डर but इक्वल्स टू 1 Flutter has a lot और of advantages. Second alternative बॉर्डर is that you कलर create a इक्वल्स टू progressive web app. Now, वाइट you might not know what that is. It's a website, ये essentially. है आप It's देख लो not a native mobile अब app. ये सारे It's इक्वल आ not रहे हैं ना distributed through the अगर app मैं यहाँ पे stores. इसमें Instead, it's a हटा दूँ website जैसे which मान can लीजिए अगर also मैं यहाँ पे access वेट्स some हटा device दूँ इसकी features. Browsers are evolving and give you more and more तो फिर क्या access to होगा ये these features. ऑटोमेटिक लेगा अपने हिसाब से But लेगा you उसकी can't वेट को control which browser ये your डिफरेंस users है are going to use, so maybe the ठीक है users are क्लियर हुआ using a browser which does not support that यस feature. सर. So this समझ is में a आ गया nice way of creating an app for cases where you can fall back to a, well, less capable version. But if you're building an app that needs to be able to take in pictures, well, then you might need a mobile app. Now, the third alternative gives you a native mobile app, just as Flutter does, but it uses a different approach. You can use solutions like Ionic, Cordova. You might not have heard of these, but what they do is they give you a real native app, but they give you a wrapper which just runs a browser in that app, let's say. And therefore, you create a web app which then runs in the browser, which is guaranteed to be able to use certain features. Ionic, Cordova gives you access to these features, but you still have a website. The cool thing is, if you're a web developer, this is pretty easy to use and pretty easy to create awesome apps with it that look really great. हाँ सर. But of course, the performance is a bit worse than when building real native apps or when having real native apps at the end, as you do with Flutter. Because here, obviously, everything runs in a browser still, so you have this extra layer. With Flutter, you get real native apps because everything is compiled to native code, and therefore performance is better. So Flutter is not the worst solution, and Flutter is definitely a cool tool to learn, which should make the development of native mobile apps way easier than तो it was in मैनुअल the बनाने past. के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया था एक टेबल टैग लगाया था
और You टेबल might have टैग के seen it अंदर आप in देख that रहे होंगे first हमने little app tr we लगाया है spun up टेबल a की few रो बनाने lectures के लिए ago. और Flutter uses the उसके material अंदर फिर हमने design. यहाँ पे एलिमेंट Now, को this दिखाने looks के लिए something like टीएक्स this. टैग You might have लगाया है, seen that ठीक in है। different Google तो टीएक्स apps. टैग में आप देख रहे होंगे Material हमने कुछ design is a प्रॉपर्टी लगाई है, design system developed एक तो by हमने Google. यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी It's लगाई है not जिससे क्या होगा, Google's style only though. Instead, it's हर एक highly सेल पर customizable. इक्वल हो जाए। And in this course, you will see that you can set different कौन सा colors, that हमारे you can अच्छा change तो the look of widgets. You can do a lot with it. It's important to understand that Flutter embraces that material ये हमने design तब though, नहीं किया था। but you can tweak and adjust basically जब रो everything. हमारी You can कंप्लीट हो add गई or तो उसके बाद remove टीआर drop टैग खत्म shadows, हो you can गया, change colors, so you can make it your design. You're not creating a Google app here. That's really important to understand, but it's also important to understand that you're going to use that material design for both Android and iOS, though there are some iOS-specific widgets that really have that iOS look. I'll have a whole module about that for cases where you need it. But in general, be उसकी जरूरत prepared तो है to नहीं use ना, that material उसका design कैन and ऑप्शन है adjust नहीं, it to your अगर requirements. Well, you will see how that works उसके लिए in आप that course, obviously. लिखोगे बॉर्डर इक्वल्स टू So 1, material design जैसे is टेबल में built बॉर्डर into लगा Flutter and वेट लिखना है embraced कलर by इक्वल्स Flutter. टू You'll see the term वाइट दे material दीजिएगा a lot because a कि whole यहाँ पे Flutter कोई app दूसरा is in कलर general a material app डार्क where you बैकग्राउंड then में add दिखेगा नहीं, various वाइट widgets. दिखता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना होगा उसके लिए, With all बॉर्डर of that इक्वल्स out टू of the 1 way, और it's बॉर्डर time कलर to इक्वल्स dive टू into जो भी Flutter आप कलर and वहाँ learn पे देना about चाह its रहे core features. We'll do this soon, but ठीक है, here's one important thing. क्लियर हुआ। Flutter is a moving target. It's actively तो under आगे मैं development. बताऊँ फिर It's आप लोगों still को evolving and ये evolving तो quickly. समझ में आ गया It's पहली बार stable कैसे now बनेगा। and marked as ready for अब production मैं आप लोगों by को the Flutter इसमें team, so we shouldn't नीड expect वैल्यू huge बनाने का breaking तरीका होता changes, है, but new ठीक है। features could be added. अगर क्या Tiny things could change. यहाँ पे I'll do my इमेज best to बनाने keep you आती है, updated, इमेज but कैसी it's a है good idea कैसे for नहीं you होती, to also तो मैं आप regularly लोगों को बताता check the हूँ। official docs, तो धीरे stay धीरे updated, follow these steps I will highlight अब at होम the पेज end of the बनाने में थोड़ा course टाइम in तो the लगता roundup. है, ठीक है। अगर आज नहीं हो It's पाएगा also तो मैं आपको important to कल understand बताऊंगा, that since अभी Flutter हम is relatively new, we have already a decent set of एक third-party नई फाइल packages ओपन कर लेते adding हैं, certain functionalities and making certain things easier, but we'll probably see more third-party packages being added to तो the सबसे पहला ecosystem टैग हमारा as कौन सा this, यूज होगा well, वहाँ पे, becomes older. HTML, Additionally, ठीक है, we have some और best HTML हमारे practices यहाँ पे and क्लोज patterns, रहेगा। and I do my best to उसके follow बाद them and show फिर them in कौन this सा टैग course, लगेगा हमारे but यहाँ पे obviously हेड, some new patterns और might हेड के अंदर आ emerge जाएगा in the टाइटल, future. तो So here यहाँ पे हम too, it's a good लिखेंगे idea to टाइटल stay स्टैक up to गैलरी, date and be ठीक हो गया। prepared to switch to other टाइटल टैग हमारा patterns क्लोज हो जाएगा, when they उसके बाद become हेड more सेक्शन हमारा stable बंद हो or जाएगा। if फिर आ something जाएगा becomes बॉडी टैग, best practice. और बॉडी टैग हमारे Last यहाँ but पे not least, ओपन हो there will जाएगा, be bugs. क्लोज हो There जाएगा, will be ठीक bugs है। in this course and we will fix them together. We will find workarounds and you अब will see इमेज that you गैलरी can में आप लोग achieve को यहाँ पे pretty much टेबल टैग से everything ही with बनना Flutter. होता है। Sometimes अब you need देखिए to यहाँ be पे टेबल creative, टैग के कितने but that's not फायदे necessarily हैं, a या टेबल problem. You बनाना still जो save आपने so सीखा much था time उसके यहाँ because पे you don't कितने have to बेनिफिट learn हैं। two different टेबल languages, के थ्रू and ही हम क्या these कर रहे हैं, यहाँ languages पे would मेन्यू have बार some बना रहे bugs हैं, too. और But टेबल के be थ्रू ही हम prepared यहाँ पे to इमेज गैलरी भी बना meet पा रहे some हैं, bugs ठीक and है। to और टेबल के थ्रू fix ही some मैं आप लोगों को things यहाँ पे होम which पेज you might बनाना have भी expected बताऊंगा। to एक work out प्रॉपर of the जो होम पेज box, होता है हमारा, which just जिसमें don't हेडर yet. होता है, This might फुटर always होता है, change when ठीक है, you're viewing कंटेंट this at a सेक्शन later होता है point of हमारा, time, नोटिफिकेशन but एक it's सेक्शन होता है important to हमारा, understand that मेन्यू बार Flutter होता है is उसके under अंदर एक active हमारा अलग development, से, which, ठीक है। that's really important, तो is a अभी good हम thing. यहाँ It पे means new टेबल features, टैग का यूज improved करने जा रहे हैं, stability, टेबल, and a growing उसके बाद फिर ecosystem. आ जाएगा यहाँ पे टेबल, टेबल के अंदर रो बनाने के लिए क्या करना होगा, With all टी that आर out of the टैग, way, let's wrap ठीक up है। this first module and let अब me show देखिए you एक what's बार में inside this कितने इमेज course. आप दिखाना We're चाह रहे pretty हैं much done वो with डिफाइन getting करता है। started. In the सपोज next अगर course आप एक module, बार we'll में have a 3 look इमेजेस at दिखाना what चाह these रहे हैं, widgets are, how we create तो our उसके लिए own क्या करना widgets, होगा, एक रो how they में work 3 together, एलिमेंट्स को ऐड and करना in होगा, general, we'll ठीक dive है। into all the basics of the टीएच Flutter framework और टीएच and the मेरा Dart क्लोज जाएगा, language. You'll learn टीएच this ओपन हो along the जाएगा, way. फिर यहाँ पे Now, टीएच मेरा thereafter, दोबारा you'll से learn how क्लोज to जाएगा, debug your Flutter ठीक है। app, how to तो run ये it on मेरी different फर्स्ट रो बन devices, जाएगी, on emulators, on iPhones, on Android devices, ठीक how है। to do चेंजेस all कर that. लेते हैं इसमें, Because इमेज obviously, टैग लगा देते testing and हैं। debugging your इमेज app इंसर्ट is a करने के super लिए क्या important लिखा part जाता है, of the whole development याद है आप cycle. लोगों को, बताइए Now, क्या लिखना thereafter, होता you'll है। learn how to render lists of content and how to do that in a SRC, high-performance SRC में way. फाइल का नेम And आ you will जाएगा, learn how ठीक to है। render और conditional इमेज content. की So how हाइट to और render विड्थ आप something देना if चाह रहे हो some तो वो भी condition is जरूरी है। met. That is a इमेज common की हाइट हम scenario, यहाँ पे and you अभी will रख learn how देते it
works फिलहाल in this 250 module. और Once we're done width with हम लिख that, it's देते हैं time to इसकी dive into 300। navigation. A Flutter अभी app तो or अपने हिसाब से any मैं app इसको ले रहा typically हूँ, has ठीक more है, than one page, and you'll learn how to navigate between these pages, how to ठीक है, pass इसी को हम data कॉपी back लेते and हैं forth, how और to यहाँ add पे पेस्ट कर tabs, लेते how हैं, to add a side drawer, तो हमारी all 3 that fun इमेजेस stuff. यहाँ पे आ जाएंगी।
Once done with that, we'll ठीक dive है, into user तो input and इसको how to पूरा ही handle कर it, लेते how हैं। to ये present a हमारी text वर्क field है। and react तो to सेकंड रो बनाने के लिए keystrokes, हमें so when सेम the कोडिंग user करनी होगी, types तो something. हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर As a लिया, next step, ठीक I'll है। dive deeper into एंटर widgets. करके I'll थर्ड रो explain बनाने where के you'll लिए भी find हमें all सेम कोडिंग available करनी होगी, widgets, how क्योंकि to कोडिंग lay तो out दोनों के लिए pages, and in पूरी है, general, dive a ठीक bit है। deeper into this तो whole इसलिए हमने concept यहाँ पे क्या and किया, into सबको everything you कॉपी need to know about them. क्या हुआ। It's then time अब to go हम back क्या to करना user होगा, input, इमेजेस but in की a more नेम्स advanced यहाँ way. पे You'll दिखाना learn है, how to add ठीक है। forms, तो which उसके is लिए हम just क्या a कर group सकते हैं, of अपने inputs फोल्डर basically, में चले and जाते how हैं, to validate user देखिए जो input. नहीं Is that email address really an email address? डॉट We'll find out in this जीबी module. जितने भी Thereafter, we'll इमेजेस have a आप look at some देखोगे यहाँ improvements for the पे app we're building, because as I mentioned और already, we'll build an दो entire तीन app throughout इमेजेस आप this course, देखोगे कि and here जीआईएफ we'll फॉर्म में है, एक reflect पीएनजी फॉर्म में on है, it for the एक first time and पीएनजी improve फॉर्म some में things. है, तीन भी And then इंटरेस्ट we'll में, dive into new features, ठीक है। and अगर आप specifically सिंपली into इनको ही models इंसर्ट and करना state चाह रहे हो तो management. 1 2 This 3 sounds 4 abstract, but 5 by the इमेजेस तो point हैं we हमारे यहाँ reach पे, this, you'll ठीक है। know what I mean. तो And क्या this करना essentially होगा means उसके लिए, how do we work with the data in our app. सोर्स हमें देना We'll होगा learn it 1 in this डॉट module. जेपीजी, ठीक हो गया। Thereafter, यहाँ we'll पे आ not just जाएगा work 2 with data डॉट on the जेपीजी, device we're running the app, but also फिर आ you'll learn जाएगा how to 3 send डॉट it to servers so that you जेपीजी, can store it in databases there, ठीक हो, or how you फिर आ can जाएगा fetch data, 4 so डॉट how you can communicate जेपीजी, with some backends across the web. लास्ट And then आ it's time जाएगा यहाँ for पे some user डॉट जेपीजी। authentication, because most अब apps इसके require authenticated हम यहाँ users. पे You 3 will learn सेकंड, how to ठीक है। edit, how to add क्या नाम logout, है how इसका, to manage the एंटर user डॉट जीआईएफ, authentication status in this हमारी इमेज module. ये है, It's then time for ठीक some है। native एनिमेटेड device इमेज की हमारी features. है, How can we get the user location? डॉट How can we जी आई render एफ, maps? How can we और access एक the इमेज है device हमारी यहाँ camera, पे take बॉल डॉट pictures, or पीएनजी get an image from the gallery? All डॉट पीएनजी, questions answered ठीक in है। these two modules. दूसरी इमेज है नेक्स्ट हमारी We're यहाँ nearing पे the end then, माई but not before लोगो talking about डॉट animations. पीएनजी, How तो can you एडिटिव हमें fade ऐसे ही and लिखना slide होगा, elements? How can you set up your own ठीक out है। transition and not use the default one? That will be covered in this module. Thereafter, we'll do some polishing and bug fixing because the app is almost done. And करेंगे then we'll फाइनली इसको dive फिर कराई गया into कि कैसे इंसर्ट करनी है, ये platform-specific तो आप code. लोगों ने पहले How भी can सीखा you था। determine on which platform you're running? Is it कोई iOS? Is it Android? कोई नया We'll ऑप्शन learn it नहीं है in आप this लोगों के लिए, module. कैसे इंसर्ट करना Once है done तरीका with पता that, लग गया, लेकिन we'll टेबल में learn कैसे how इंसर्ट to करना add है ये भी native आप लोगों को code, पता so चलेगा, how you can ठीक है। implement a इसका certain एक फायदा feature क्या which होगा कि might हमारी not एक be प्रॉपर available in इमेज Flutter, गैलरी and बन for के which you आती है, also don't find a third-party package. कर How you लेते can हैं implement that by writing your और नाम native रखते हैं code इसका हम on your गैलरी, own. So गैलरी writing डॉट Java एच or टी Swift or एम एल, Objective-C code ठीक on है। your own, and सेव then में क्लिक कर दिया connecting that मैंने, to Flutter. फाइल You'll हमारी सेव हो probably गई। not need that अब हम यहाँ से often, ओपन कर but it's लेते useful to हैं have that feature, and गैलरी, it's good to learn राइट about it, क्लिक I guess. और ओपन विथ And then we'll ओके, publish the app. We're done. You will learn how तो ये to हमारी build it गैलरी बन for के आ गई, production ठीक है। and how to अच्छा ship it एक to इमेज the app हमारी यहाँ पे stores. नहीं दिख रही है, You'll be a ये वाली real इमेज, Flutter तो चेक कर developer लेते हैं क्या दिक्कत thereafter. आ रही है इसमें। Lots of content to cover. Let's dive in. कौन सी इमेज थी हमारी, 5 डॉट And जीपीजी। to dive in, अब एक्चुअल में let me हुआ क्या, explain how you इन्वर्टेड get the कॉमा के most out of बाहर the आ गई course, है, because that is ठीक है। really important to तो me. इसलिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा, Obviously, जबकि हमने watch the लिखा सही videos, था, but do it at your speed. ठीक है। Pause the videos if I'm going too रिफ्रेश कर fast. लेते हैं, Go back to a certain अब देखिए concept which बिल्कुल is सही आ clear. गई। Use the Udemy तो ये playback हमारी इमेज controls गैलरी to होगी, speed me up or ठीक slow है। me down. अब लेकिन इसको Because प्रॉपर I फॉर्म में try to दिखाने के find the लिए right balance. हमें I क्या don't want करना to होगा, bore you. I don't want to टेबल की do कुछ a एडिशनल प्रॉपर्टी 5-minute यूज pause करनी after होगी, every sentence, क्योंकि but टेबल के obviously I अंदर don't भी want to काफी rush सारी through it. प्रॉपर्टी होती हैं, So वहाँ पे तो adjust उसका my यूज आपको speed समझ में to नहीं आता, your अब यहाँ needs पे उसका and यूज make आपको sure समझ में that you आएगा, therefore get the ठीक है, most out of this. कैसे हम इसको यूज Also, करेंगे। code तो along, सबसे do the पहले ही exercises. आपको क्या This करना is होगा, really how you टेबल learn की the विड्थ most, को because 100% कर देना watching the होगा, videos is great. ठीक है। Practicing that, writing code on your अलाइनमेंट own, आप सेंटर कर सकते हो, that मान is लीजिए आप very टेबल की useful. विड्थ 100% नहीं So करना this चाह is रहे हो, a good लेकिन addition अलाइन to आप कर दीजिए watching the सेंटर, videos. तो उसका एक फायदा And क्या I होगा, do also गैलरी provide a आपके lot of बिल्कुल सेंटर में resources. दिखेगी, बीचों बीच, Attached to the last ठीक lecture हो of each गया। module, you will find my source code एक and तो also करेंगे, further आप links. कर दीजिए Now, the यहाँ source पे code is not a project you can run already, but it is all the किसमें, Dart and Flutter code we wrote, all the packages we added, so that you can compare it to yours or replace yours with it temporarily to find issues, हाँ, fix issues. ये Because जो most of टीआर the हमने issues यहाँ पे दिया can है be और fixed by दोबारा से हमने जो simply टीआर comparing बनाया code. उससे दूसरी That's रो why I'm बन गई, providing जो it. दोबारा हमने Now, टीआर if there is लगा है something इससे
I एक की वो absolutely बन गई वहाँ can't पे, fix, or ये if there is कोडिंग में ही something you देना पड़ेगा didn't आपको, understand logically, you तब can होगा post ऐसा, questions in the ठीक है। Q&A section. I'll do my best to टोटल answer 9 your इमेजेस survivor हमने यहाँ पे questions इंसर्ट करे as हैं, fast as I ठीक है। can.
अब But I देखिए विड्थ also want होगी to हमारी encourage वहाँ पे you to help your 80%, fellow students ठीक हो गया। answer तो ऐसे दिख questions, रहा है। not because अब I'm ये तो lazy, ठीक है, but हमारी विड्थ because तो सही आ गई, this लेकिन आप देख रहे होंगे दो challenges you इमेजेस to के बीच में think जो about the गैपिंग है, concept you वर्टिकल thought गैपिंग you जो है वो ज़्यादा understood. नहीं आ रही। So definitely तो do उसके लिए that. हमें क्या करना Help होगा, our students उसके answer लिए questions. एक ऑप्शन And आता don't है be हमारे पास, afraid यहाँ of पे giving a प्रॉपर्टी wrong आती है answer. What could happen? You get corrected and then सेल you learn more. स्पेसिंग। So help our students. This is a great way of learning more and अच्छा, using the सेल things you स्पेसिंग learned का मीनिंग क्या and होगा कि जो practicing them. डिफरेंट सेल्स है Great हमारे learnings उसके are बीच guaranteed में with this approach. कितनी होगी। And now with हमने that, यहाँ पे लिखा time कि to leave 20 this होगी, module and to ठीक है, dive into widgets, Flutter पिक्सल। basics, and write a lot of code. इस तरह से आप Welcome to this module where we will finally dive into Flutter and Dart and how we use Flutter to build amazing mobile apps. In this module, I'll walk you through all the core basics you have to know about Flutter, and that mainly is about widgets. Widgets, as you will learn, are the core building blocks you use to build your UIs, your user interfaces for your Flutter apps, and you will learn how to use built-in widgets, how these are organized, and also how you create your own widgets. And you'll of course not just learn that in theory, but will use them to start building our course project already. And whilst we're on that, we'll also dive into some other basics, also regarding the Dart language, so the programming language used by Flutter. I won't bore you with Dart only introduction. I believe it's much better to learn it whilst you are also learning Flutter, so you will learn everything you जो need to सेल know का about बॉर्डर Dart होगा और whilst you जो also learn कंटेंट है Flutter दोनों and के how बीच to की जो build apps गैपिंग with होती it. है, So with that, ठीक है। अभी let's कैसे dive समझ में right in. आएगा आपको, जब Let's मैं यहाँ पे create a रूल new अप्लाई करूँगा। Flutter app, our अभी तो course ऐसे पता नहीं project, चलेगा, and let's अगर start मैं यहाँ पे working on बॉर्डर it. अप्लाई करूँगा तब आपको पता चलेगा बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ठीक है। To create a new Flutter app, I will again use the बॉर्डर का कलर Flutter देना पड़ेगा command. लेकिन हमें, And that command, of course, is still available since I installed the Flutter SDK. We did that together in the first course module, ठीक है। आप so देख make रहे होंगे sure to सेल का बॉर्डर आ definitely गया, go through that. ठीक है। With that टेबल का installed, बॉर्डर you अलग है, can सेल का run बॉर्डर अलग Flutter. है, तो However, सेल के not बीच just में Flutter, स्पेसिंग तो but the आपको दिख रही create होगी। command from that ये Flutter किससे आई हमारी, SDK. And then ये आई simply हमारी pick सेल any स्पेसिंग प्रॉपर्टी के project थ्रू, name you want, ठीक है। like अब लेकिन मैं Flutter चाह रहा हूँ यहाँ पे course. कि जो Just हमारा one important note, don't use a dash here or anything like that. Your जो name should सेल be का one बॉर्डर word, आपको दिख or रहा if you है got और multiple दूसरा words, स्ट्रिंग बड़े separate है, them तो with उसके an लिए क्या करना होगा, हमें underscore. यहाँ पे Now सेल with that, पैडिंग लगाना hit होगा, enter and it will ठीक है। create a new तो सेल folder पैडिंग का मतलब होता in है that एरिया destination where बिटवीन you're running बॉर्डर this एंड command. कंटेंट, So make ठीक है। sure you're running it in the तो right सेल पैडिंग मैंने कर destination. दिया 20, And it will populate this तो ये folder सेल with a पैडिंग lot हो of गया मेरा, files that make up ठीक हो गया। your समझ में आया Android आप and लोगों को, iOS दोनों project में क्या written डिफरेंस in है। Flutter, of course. सेल स्पेसिंग So क्या let's होता है, wait for this to finish पैडिंग before का we होता then open it with an है, ठीक है। IDE or editor and work लेकिन on आप the code. इस प्रॉपर्टी The में creation of the project finished, सेल and now you see the commands you स्पेसिंग can run क्या in the log it तो prints लोगों को here. पता चल गया होगा। However, I will not run them right now. Instead, I तो want to हम एक open that newly created project and that बॉर्डर को भी created मैं यहाँ पे folder, हटा दे रहा therefore, हूँ, हम with an यहाँ पे IDE. सेल स्पेसिंग का Here, यूज I कर रहे opened the project हैं। with सेल पैडिंग Visual भी आप Studio Code, a free IDE you can use, which I also showed you in the first course module. You can, of course, also use Android Studio as an alternative. Just make sure that in both IDEs, you got all the Flutter plugins or extensions added to get the best Flutter development experience. Now, in that IDE, I also opened the integrated terminal, which you can open with View, integrated terminal, or that shortcut here. And in there, I can now run the Flutter run command, since this is already navigated into the project folder. However, there also is another way of running this, but in order to run it, we need a virtual device, we need an emulated device, or a real device, but I will go with an emulator, so let me quickly start one. Now, to bring that emulator up, I'll use Android Studio, however, अब not अगर to आपको write कोई code, गैलरी but go बनानी to है, चाहे वो Tools, इमेज the गैलरी ABD हो, Manager ठीक है, there. There या we फिर आप can manage टेक्स्ट के our फॉर्म में भी virtual इस टाइप का devices. गैलरी You see, I बनाना already got चाह a रहे हैं, couple कई of बार होता है ना, devices. आपने You टेक्स्ट can को भी always ऐसे create अलग a अलग new फॉर्म में one with बॉक्सेस के Create फॉर्म New में Virtual Device on the bottom कहीं पे left. ऐसे लिखा हुआ Click दिखा through होगा, all these ठीक settings, है। choose an वेबसाइट में ज़्यादा image. ऐसा You यूज होता है might हमारा, need to download one. और Make तो sure कहीं to नहीं, not use the वेबसाइट में ज़्यादा latest यूज one, होता है ये but use the प्रॉपर्टी हमारी, latest stable ठीक one है। instead. And then simply create a device by going through that wizard.
Once you got a device created, you can select it here and start it with the play button on the right. And that will be तो ये the आपको only इमेज thing I गैलरी do बनाने का with तरीका समझ में Android आया। Studio here. इसको थोड़ा सा Now और I got एडवांस that फॉर्म में virtual बना device सकते up and हैं, running. ठीक And है, now बट back अभी in नहीं होगा। Visual जब मैं Studio आप लोगों Code, को CSS I mentioned बताऊंगा that तब आप there is इसको another way एडवांस of फॉर्म में भी बना starting पाओगे। our app, and एडवांस that is फॉर्म में to go बनाने का to मतलब ये है कि हम debug, जैसे and then इसमें you can select start मैग्नीफाई कर debugging पाना, or use the उसके shortcut ऊपर or कर्सर ले जाने start पर without इमेज debugging हमारी or क्या हो use जाएगी, that मैग्नीफाई हो shortcut. जाएगी, This will इमेज also हमारी जूम हो launch the जाएगी, Flutter app on the ठीक है। connected ये हमारी virtual गैलरी or जैसे real अगर मैं किसी device, इमेज के ऊपर and you कर्सर ले can आता हूँ तो choose if you इमेज want to हमें go into जूम होकर debugging दिखाई mode, देगी, something I will ठीक है। cover in a separate module, या or for क्लिक now करने पे simply जूम go हो जाए, start the ये app. ऑप्शन तो हमारा You might be HTML के prompted अंदर to ही select आता an है कि environment, अगर मैं and किसी you should इमेज में have the क्लिक कर रहा option हूँ of तो Dart इमेज and हमारी Flutter खुल if you के आ installed जाती the है। extensions आपने for देखा these होगा tools. इमेज हमारी So select Dart ओपन and होके एक Flutter, बड़ी फॉर्म में हमें and now दिखाई this देती enters है, the ठीक debugging है। view. You तो can ये always तो go हमारा back HTML with के अंदर ही आ the जाएगा, ये तो मैं आप explorer लोगों को बता ही or the दूंगा। shortcut to go back into that लेकिन file इसके अलावा अगर जैसे मैं and बात now it करूं will कि build your इमेज के Flutter ऊपर application कर्सर में ले and गया, ship it पॉइंटर ले गया, to तो that इमेज virtual हमारी जूम होके device. दिख जा रही है। So let's तो wait for ये this चीज to हमारी finish. CSS On the के थ्रू first ही हो पाएगी, startup, this can take a while. ठीक And by the है। way, you get this control तो panel अब here आप लोगों at को the पता top लग गया where you can यहाँ पे always इमेज restart गैलरी it बनाने का or तरीका, quit it कोई or दिक्कत तो नहीं है pause it, इसमें and किसी को भी। later again we will learn how to सबको आ गया use समझ that में? debugging tool. For now, let's wait for it to start. तो आगे बताऊं फिर मैं आप लोगों And को here it कुछ is. So कोई this is the दूसरा starting ऑप्शन? application we are starting with, and this is the हाँ application बताओ। we'll not work with. We'll write one from scratch in it. So let's do that in the next lecture and the lectures thereafter. So we got our आपकी आवाज Flutter app up and running, and keep that process running here for now. बताइए। Go to the main.dart file in the lib folder Hello? and delete everything in there, because I want to start with you from scratch हाँ रोहित कुछ and कह रहे really हो? teach you how this एक बार works जरा and how बिना such a माइक्रोफोन के Flutter app बताइएगा। starts. Now, before we start writing code in there, let me quickly walk you through the other folders and files we got here. The idea folder is a folder for Android Studio with TH some और basic TD में config. Don't delete it. TH और You're TD में allowed to work in that, हाँ आवाज आ रही है, अभी no सही आ matter रही if है। you're using Visual Studio Code or Android Studio. The Android हाँ and the TH और iOS TD में folders are ऐसा है ना जैसे important because डिफरेंस। they hold the हेलो native code and an important part हाँ of बताओ। the app building process, which you TH need और TD में for, डिफरेंस well, पूछ रहे हो building ना? an app for these platforms. You rarely work in these folders, हेलो? though from time to time you हाँ have मेरी to, आवाज आ रही है and रोहित I'll आपको? show you when that is. But these are required since they hold source code, which is used by that build हेलो process आवाज आ रही है together मेरी? with your Flutter code to build हाँ said जैसे TH apps. और The TD में build डिफरेंस। folder is a folder you can ignore for now. In there, you find your हाँ हाँ build देखो source उसमें code ज़्यादा कोई again, ऐसा which is डिफरेंस नहीं है, used by उसमें the build केवल अलाइनमेंट का process. डिफरेंस होता है, वो मैंने The आपको बताया lib ना। folder is, TH however, का where you अलाइनमेंट write your entire क्या Flutter app. और So TD this का is the अलाइनमेंट folder क्या we will work in. लेफ्ट होता This है। is the folder तो दोनों में where से we जो भी write आप our यूज करना Dart and चाहो Flutter आप कोई भी code. यूज कर सकते हो, The test ऐसा folder नहीं would allow you to write automated tests, but this is not something I'll focus on right now. And the other files here are basically configuration files. For Git, in case you're using this, it's a version control system. ठीक है। तो Then a couple प्रॉपर्टी वहाँ of पे क्यों लगाएंगे? उसके लिए configurations हम एक काम for ये कर the सकते हैं कि SDK, for the TH Flutter टेक्स्ट कर SDK. लें वहाँ You पे, don't need to change anything तो there. उससे इजीली क्या The हो जाएगा, जो भी pubspec.yaml कंटेंट हम file वहाँ पे लिखा हुआ configures your दिखा रहे हैं, overall चाहे project वो and हमारा its पैराग्राफ dependencies हो या code. फिर And this नॉर्मल is an important हमारी file. इमेज हो, There, जो we भी will हम दिखा later रहे हैं लिखा add हुआ, तो इजीली third-party आप कर सकते packages हो। we're using, like for सेंटर example, में when दिखा we देगा add वो the आपको, camera, then we can ठीक use है। the device camera. And we will also revisit this क्लियर from time to time to change certain कोई दिक्कत configurations, like for example, add static assets. For कंटेंट को now, भी leave इसी the फॉर्म में file as it दिखाते हैं, is, ठीक है। and let's कंटेंट go को इस back फॉर्म to में the कैसे दिखाता तरीके main.dart भी file. आता हूँ, And in here, कई बार I now कंटेंट को want भी to हमने write ऐसे some अलग basic अलग code to start our application. तो अभी आपको The बताइए। main.dart file is a very ठीक है, important हमने file, पानी and टेस्ट you कर ली should थी not rename it. Because Flutter, when building your project, will Hello. look for that main.dart file, and in that Sir. file, हाँ it will मानसी look कुछ कह for a रहे हो? special function to execute हाँ to essentially ये जो हमने start your टेबल app मैच on the अपना इमेज device. अप्लाई So की you थी can ना, think of this as this entire Dart code will इसमें be हम compiled and bundled with the Android हाँ or iOS है code. ना, So it will be bundled into one application, which is shipped to your native device. हाँ And इमेज on आप this इंसर्ट device, in this app, करोगे then इक्वल the होनी चाहिए, main.dart अगर file इक्वल नहीं or होगी one फिर specific टेबल function in आपकी there will be ऊपर executed नीचे first. चलेगी, And that फिर function which it's looking तुम्हें for आपको in the main.dart file is also called main. Now, a function, just in case you're ये relatively हमारी new to programming, is essentially a block of code you हाँ define ये which doesn't execute जो भी हमने immediately, यहाँ पे but लिखा which हुआ needs है to be पिक्सेल्स भी called होते हैं, to be अगर executed. मैंने A function
function in तो Flutter फंक्शन की फॉर्म में is करेगा created
by अगर typing the पिक्सल name मैंने कोई like वहाँ पे main and तो क्या this specific function which Flutter is looking for at app startup has अब to हम be क्या कर named रहे हैं यहाँ main. पे In general, you can name functions how you want, but this one has to be named main since Flutter is looking for it. So you type the name of the function and then parentheses. And here you could specify any arguments, parameters this function would वो receive, तो so data इमेज that का function साइज हो can गया use वो inside of its body. The main केबी में function नहीं आएगा, वो here तो doesn't यूनिट नहीं होती receive है ना, any. वो तो उसका इमेज का Now the साइज है, function body is the code which should be वो executed, यूनिट नहीं and होगा. you define it by adding curly यहाँ पे यूनिट braces, की बात opening and आती है. जैसे closing. अगर हम इमेज The की code in here will be जैसे executed whenever the वैल्यू हम main दे रहे function हैं is उसकी called. यूनिट क्या है, And if तो you या were तो to call वर्टिस it, यूज कर you रहे would हैं call या it फिर like पिक्सल this, का यूज कर रहे simply by हैं, क्योंकि typing HTML main. के अंदर तो दो ही This यूनिट would होती है ना, execute the ठीक main है, function एक ही here. यूनिट होती है However, इसमें. for this कोई special यूनिट function, नहीं. we won't call it. अब Flutter will देखिए do अगर that मैं for यहाँ us पे कंटेंट को automatically, एडजस्ट करना which चाह is रहा why we हूँ, तो have to name कंटेंट it को हम main कैसे and एडजस्ट why कर it should पाएंगे, be in the वो तरीका main.tar भी देख file. लेते हैं. Now ठीक है, in here, you तो basically फाइल को हम पहले start सेव कर लेते your हैं यहाँ app, पे. which means you start rendering the user interface. टेबल All पैराग्राफ the की heavy फॉर्म में lifting टेबल to hook it पैरा into the operating डॉट system and so on, एच टी that is एम एल, done with the ये Android and मैंने फाइल का iOS नाम files, रख you दिया could यहाँ पे. say. ठीक है, But to bring टेबल something पैरा onto डॉट the एच screen, टी एम एल, you have तो to फाइल का नाम do तो जो भी something रखे हैं in आपको that समझ में main आना function. चाहिए. And that अच्छा something is that you need to attach ठीक, a widget to the screen. Now, what is a widget? जितनी भी इमेज यहाँ पे दिख रही है उन सबको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि Flutter अब हमने is इमेज नहीं all दिखानी है. about या widgets. सपोज कभी मान लीजिए Widgets कि are आप basically इमेज building दिखाना चाह रहे हो, blocks, ऐसा भी हो सकता user है interface कि components, you दो could say, इमेजेस आप दिखाना with चाह which रहे you हो, create your, कई well, बार हो user जाता है ना, interface. So और what the बीच में user sees on आप the वहाँ पे screen. टेक्स्ट दिखाना चाह If रहे you हो, have ये a भी हो Flutter सकता है. app, so a mobile app तो वही running वाला on a फॉर्मेट mobile बता देता हूँ device, आपको फिर it मैं, वो typically ज़्यादा अच्छा consists हो of जाएगा, multiple आपको widgets, काम भी हो like जाएगा the आगे. app bar, the navigation bar at the यहाँ पे top, हम टेक्स्ट दिखाना maybe चाह a रहे हैं, header तो image, पैराग्राफ and बनाने maybe a के लिए कौन list सा with a टैग couple आता of है, list items. All these things पी here टैग यूज are है. separate ठीक है, आपको पता widgets, ही and they often पैराग्राफ contain बनाने के other लिए पी widgets, टैग यूज like the करते हैं. list here. It contains the list तो पहले items हमने क्या किया, as दो child पहले widgets. वाले में इमेज दिखाई, The फिर page पैराग्राफ दिखाया, itself फिर is इमेज even a दिखाई. widget, the दूसरे scaffold वाले widget, में हम क्या कर रहे हैं we यहाँ also पे, create on our own throughout this पहले course. पैराग्राफ And दिखा even देंगे the हम यहाँ entire पे, app is wrapped ठीक in है, one root widget. So फिर एक widgets are इमेज really दिखा just देंगे these user और interface फिर यहाँ पे components, पैराग्राफ but दिखा they're not देंगे. just about the visuals, they ठीक also है, contain logic. For example, a button widget would not just पी display the टैग हमारा button, क्लोज but हो जाएगा. also you would define what should happen when that button is tapped. So that is how you think about अच्छा, ये Flutter. तो हमने You चेंजेस build किए थे Flutter apps not by इस doing वाले all में, the heavy lifting ठीक है, of फर्स्ट वाले में भी तो चेंज hooking नहीं it हुआ into the ना. operating system, but by तो चलिए creating सीक्वेंस तो user हमारा बन ही गया है. interfaces जैसे पहले and the इमेज है, logic फिर that belongs to पैराग्राफ है, that user फिर interface. इमेज है. Things like ठीक है, यहाँ selecting पे हमारा items, पहले पैराग्राफ है, uploading फिर things इमेज है, to फिर a पैराग्राफ है. server, अब fetching फर्स्ट data में भी from a हमें ऐसे ही server करना and पड़ेगा, rendering पहले it हमें to यहाँ the पे screen. पैराग्राफ देना That पड़ेगा. is what you do ठीक है, with these तो widgets. पैराग्राफ देने के And लिए therefore, you can पी think टैग of आ your जाएगा. Flutter app as ठीक a है, पी टैग tree हमारा of बंद, these फिर widgets. इमेज You have और one फिर लास्ट root में widget, as I पैराग्राफ. just said, to wrap your entire app. And then you might have widgets for the different इस टाइप से. pages of your app अब between which पैराग्राफ you can इंसर्ट navigate करने का around. एक तरीका भी And मैंने then आप you लोगों को have बताया था. nested सपोज अगर मैं यहाँ sub-widgets पे for इसको रन list करता हूँ, items, ठीक है, एक बार for इसको रन user कर लेते हैं. input forms, क्या नाम things रखा like था हमने that. यहाँ पे, So you टेबल really पैरा build डॉट up such a एचटीएमएल. tree of तो राइट widgets, क्लिक and you do all of और that ओपन in विद, code. So with जिस Dart ब्राउजर से भी आप programming ओपन करना language. चाह रहे हैं, Now मैं यहाँ that's पे इसको theory, ओपेरा से ओपन कर रहा not हूँ. super clear ठीक right है, now, I guess. So let's see तो इस how तरह that से works आपको and how दिखा we रहा हूँ. create such a widget. अब बीच में अगर यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा तो उसका लुक काफी अच्छा आ जाएगा. Right ठीक है, now, our कुछ Flutter app इन्फॉर्मेशन आप isn't दिखाना doing चाह रहे हैं much. जैसे We have that main इमेज के बारे function में, and ऐसा it भी हो will get सकता है. called for us, but we don't know तो what हम to ओपन कर do in लेते that हैं main वर्ड function. विंडो Now, I और just mentioned that the entire विंडो, Flutter app is यहाँ से built हम up पैराग्राफ with ले widgets, आएंगे. so ठीक है, maybe we should start using such a widget. So for that, we actually create our own root widget. This is पैराग्राफ how you लाने के लिए क्या typically लिखना start. होता है हमें यहाँ पे And वर्ड for में, that, we will use इक्वल्स another टू Dart आर ए एन feature, डी और classes. ब्रैकेट में कितने Class पैराग्राफ keyword. आपको चाहिए वो Classes आपको यहाँ are a पे टाइप concept करना you होता है. might know from तो other हमने लिखा है यहाँ पे programming दो पैराग्राफ languages हमें too. चाहिए, हमने Dart ब्रैकेट is में an टू लिखा. object-oriented ठीक है, programming language, तो which यहाँ means पे हम इंसर्ट everything कर is लेते an हैं object. पैराग्राफ. And an object is simply ठीक just है, a data structure. Classes allow you क्योंकि to बड़ा create पैराग्राफ है blueprints for तो new ऐसे दिखेगा. objects.
so that you can एक say और पैराग्राफ what should be इंसर्ट कर लेते inside हैं। such an object. अब हमारा Which सीक्वेंस क्या है देखिए, properties, पहले so which data पैराग्राफ, fields फिर should यहाँ it पे have? इमेज, What फिर can you do पैराग्राफ, with it? पहले सेव This कर all लेते हैं, goes फिर into चेक such a करते हैं blueprint, किस तरह से and हमें with दिखा रहा Flutter, है। you will ठीक work है, with a lot of classes which ship with the Flutter framework, but you also create तो आप your own देख होंगे ones. इस टाइप से And if दिखा you रहा create है, your own ones, you do it with the class keyword, and then ठीक है। you assign a name to the class.
Now class तो एक names काम हम typically ये कर start with सकते a हैं कि capital character, जो हमने यहाँ and then पे you अलग simply, अलग well, सेल type दिए the हैं, name, अलग अलग like for सेल बनाए example, हैं, my इनकी app. विड्थ को And the हम इक्वल कर convention is सकते to हैं, only use ठीक one है, word, but या if it फिर actually टेबल की विड्थ को consists हम of बढ़ा सकते multiple हैं, words, you ये भी हो सकता है, capitalize each word क्योंकि हमारा in जो there. ये वाला So पैराग्राफ my है app प्रॉपर would be नहीं written दिखा like रहा, this, तो हम not with टेबल a की dash, not विड्थ with an को यहाँ पे underscore. बढ़ा सकते हैं, Now that is a class. टेबल की Now you विड्थ can को हम add कर देते हैं features यहाँ to पे it. 90%। Features are two kinds of things. कई बार अगर You can हमारा add कंटेंट functions वहाँ to पे एडजस्ट नहीं classes. हो पा रहा They will then प्रॉपर, be called तो हमें टेबल की methods. विड्थ को बढ़ाना And पड़ेगा, you can लेकिन also टेबल add की विड्थ को बढ़ा variables के to आप देख रहे थे functions. इक्वल Now I नहीं आ रहा है, haven't तो covered इक्वल करने variables के लिए yet, हमें क्या but करना you होगा, यहाँ probably पे know it from other जहाँ programming पे हमने languages. टीएच लगाया Variables है are simply वहाँ पे little विड्थ data प्रॉपर्टी लगानी structures, पड़ेगी, like for विड्थ इक्वल्स example टू, a name. If you have something like this, अब देखिए well, name 80% would को be अगर a आप पेज में variable डिवाइड करते holding हैं max as तो a नहीं हो value. पाएगा, तो हम यहाँ And पे if you 90 कर add such देते a हैं इस पे, variable तो to a class, 90% it's को named a property. 3 But पार्ट में that's आप some डिवाइड theory करेंगे which will become तो कितना हो clearer जाएगा, once we continue. There is 30%, one other more important feature we need to cover right now. ठीक है, We want to create a पहले वाले widget, सेल के and लिए, a widget will be an दूसरे object. सेल We के लिए just भी want to हमें क्या create a करना होगा, class to विड्थ यहाँ define पे how that object should क्या look देनी like. होगी, However, 30%, Flutter, ठीक हो of गया। course, doesn't तीसरे know सेल की if बात a करें अगर class हम यहाँ पे, created by तो us विड्थ क्या हो is जाएगी इसकी, something it can use as a widget. 30%, Because as और you ये learned, हमें it पहली रो में needs देना होगा, certain हमारी features जो in a रेस्ट रो class होंगी to be able to ऑटोमेटिक use it as a एडजस्ट हो widget, जाएंगी, so to draw it ठीक है, to the screen. वो And खुद ही therefore, एडजस्ट हो जाती our हैं, हमें class फिर has कुछ to करने की जरूरत extend नहीं होती, something. This is a खुद ही concept एडजस्ट called कर लेगा उसको, inheritance, and you implement it by adding the ठीक है, extends keyword here. सेव कर This लेते हैं यहाँ allows पे, you to inherit सेव from करने a के base बाद, class, so from another class. And अच्छा this मेरे ख्याल means से यहाँ this पे class पेस्ट हो गया ना will गलती से, receive all the features of the class it हमने inherits पहले ही from, किया and था it एक can तो, still आई एम use or जीरो add पर, its own features. And चलिए since we ठीक then है, inherit from a class, Flutter also सेव कर knows लिया that हमने, it can सेव करने के safely use बाद अब चेक objects करते based हैं, on that class अब to देखिए draw अब बिल्कुल something onto the सही है, screen. इस Now, फॉर्मेट में the हमें thing we रिक्वायर्ड था, extend जैसे from, हमें दिखना therefore, चाहिए has था, to come आप from the देख रहे Flutter होंगे बिल्कुल सही framework. हमें दिखा रहा है, And that is where we implement another feature, ठीक है, imports. अब In this देखिए आप सही आ file, गया we बिल्कुल, write our own code, but we want to use आपने देखा code होगा कई which is जगह कंटेंट exposed आपका from the इस फॉर्म में Flutter दिखाई देता है SDK ना, and framework. ठीक है, And for तो that, उसको you add बनाने an के import लिए आप statement वहाँ by पे typing टेबल import टैग and यूज then कर the सकते हो, path ठीक है, to the file you want मान to लीजिए import कोई from. पैराग्राफ आपको यहाँ Because पे बीच Start में is रिक्वायर्ड actually है, a हमने कॉपी तो modular ऑलरेडी किया हुआ है, language, which means तो you हम यहाँ पे split क्या your करेंगे, code सिंपली across multiple files. पी टैग के And in अंदर this उस case, पैराग्राफ को we're using पेस्ट code कर which we देंगे, didn't even write, but ठीक which है, is stored in a ऐसे ही third-party हमारा package, in the कंटेंट हमने Flutter यहाँ पे भी बनाया हुआ framework था, package. पी टैग We पैराग्राफ import को हमने code पेस्ट कर from दिया, such a package by और typing लास्ट में जो हमारा पी package टैग है उसमें between the भी quotation पैराग्राफ को रख marks देते and हैं, then a colon सेव कर and लेते then हैं the और name यहाँ of पे the package, इसको which is Flutter in रिफ्रेश कर our लेते case. हैं F5, And then Flutter actually तो आप consists देख of रहे होंगे इस multiple फॉर्म में हमारा कंटेंट यहाँ पे sub-packages दिखाई देगा, or files, you could say. And you ठीक है, target a file by adding a तो अब बिल्कुल slash सही and आ then the गया, name of the file. In our case, it will be कई बार material.py. होता है आपको This इस तरह के imports कंटेंट की this जरूरत package होती from है, the तो आप Flutter यहाँ पे framework. टेबल And टैग this की is हेल्प से available बना because सकते we हैं, have a Flutter project here. ठीक Now है, we तो can समझ में extend आया a फिर आप feature लोगों which is को, exposed from that सबको package. समझ में आ गया, That is the कोई दिक्कत so-called तो नहीं है इसमें, किसी को बताइए, stateless widget. There also is another सर widget, अगर the इनके बीच में stateful widget, but we will use the stateless widget for now. Simply type it like this, and this is available because of this import. Now this class is based on the stateless widget, and therefore we can almost use it as a widget to draw it onto the screen. One important thing is missing though. We'll dive into it in the next lecture. रोहित आपकी आवाज जा रही है वहाँ पे, So we're extending from सर सेल stateless widget, स्पेसिंग and क्या कह रहे थे आप, therefore आपकी आवाज I कट जा रही है, have बात a दोबारा बताइए, valid widget here. सर ये टेक्स्ट Almost. अच्छा अगर You can गैपिंग ज्यादा already see बढ़ानी that there are some red squiggly हाँ lines under my app. गैपिंग If बढ़ाने you के लिए, hover over हाँ my हाँ app, सेल स्पेसिंग को then बढ़ा you दूंगा, should see this error message स्टार्टिंग में that आपने देखा होगा हमने सेल implementation of stateless widget build is missing. सर जो Now that's not super clear, but it's telling us that something is missing in the class, something named build. इसके लिए Well, एक to काम be कर precise, सकते हो, it's a method named build. So let's add सेल पैडिंग भी दे सकते build, हो, सेल parentheses, पैडिंग इक्वल्स टू and 20 then देगा curly तो थोड़ा braces. सा, This is how you define a function, and if a function is inside a class, you simply call Well- it method. So now we have the build method in this class. And now only the build method Hello? has red squiggly lines, not the my app anymore. सर जो The हाइट build वाला method ये is तो आपकी required आवाज कट जा because रही है, if we tell Flutter to use
draws an object based on this class as a widget it can draw onto the screen, it of course needs to rely on this being drawable, you could say. And Flutter will try to draw something by calling the build method
on an object where you tell it that it's a widget. So if you pass an object to Flutter to draw it onto the screen, Flutter will always call a build method on that object, which is why you need to add it to your own widgets. Now the build method actually takes arguments, data which will get passed into it by Flutter, because Flutter will be the one calling the build method. The build method takes one argument, the context. Context is basically all some meta information about your app and the system where this widget is drawn in. It, for example, will contain information about the materials used in our app. For now, let's simply ignore it and let's add something to the build method, because this method needs to क्योंकि यहाँ पे return सेल something, हर which किसी you सेल do by का जो adding the साइज है वो return तो सेम है ना, तो यहाँ पे Now, this is किसी का important साइज because छोटा Flutter किसी का will बड़ा ऐसा नहीं execute कर the build सकते method, आप। and अब then आपने it एक्सेल में needs to देखा होगा, know what एक्सेल to में हर draw किसी on the सेल का screen, and जो that साइज रहता something था, needs to be अगर returned एक रो की there. बात करें हम या Just एक कॉलम calling की this बात करें will तो वहाँ पे work. सेम रहता Instead, था, Flutter waits चाहे for this दूसरे method कॉलम to में return something. अलग हम कर सकते So हैं, add the return यहाँ पे statement, दूसरे and कॉलम now की the वेट हम question कम ज़्यादा just कर is, सकते हैं, लेकिन what हाइट जो do है we return अगर हम here? एक की हाइट There is a बढ़ाएंगे very important तो क्या rule. करेगा, पूरी A रो की ही widget हाइट को बढ़ा देगा, always needs to return another तो widget हाइट in में the चेंज build करके तो method कोई फर्क नहीं until you पड़ेगा ना। reach widgets that ship with Flutter. तो Now इसलिए we मैंने can हाइट का use यूज नहीं a किया है, widget that ships with Flutter, ठीक है। the material app widget. This is तो a इतना समझ special में आया फिर widget आप लोगों which is को, used जितना to मैंने आज बताया map फिर your आप लोगों को। entire app. So this will actually कई बार give होता है कि you जैसे मैं abilities एक बार to पूछ set भी up था कि अगर theming आपको for that टेक्स्ट app. भी चाहिए It will साथ में also और add इमेज a भी अगर आपको navigator रिक्वायर्ड which होती है, allows you to ठीक switch है, between तो different कैसे आप pages इंसर्ट कर and पाओगे, so तो on. उसके लिए हम So यहाँ this पे is your यूज core कर सकते हैं, root widget, which ठीक you है। use in every Flutter app you create. You तो कोई return it डाउट in तो नहीं your और own किसी का, कोई widget, बताइए, which will be the कुछ और topmost पूछना है widget किसी ने? therefore. And now the material आज के लिए तो app फिर इतना ही widget करेंगे हम, can कुछ be और configured आपके डाउट हैं to तो do बताइए। something, to really draw something onto the screen. Because right now we just created app, but there will be nothing to be seen. For that, we can pass data to material app. By the way, please notice the parentheses here. Material app like this, without parentheses, is a class imported from 4.0.1 the Flutter material ये package. वर्जन का हमें इसमें ऐसे With the पता नहीं parentheses, चलेगा। we वर्जन ऐसा है create ना an कि object जो based हमारे on the टैग्स class. बने हुए Say, हैं, we जो टैग आप यूज construct करोगे, an जैसे object, वर्जन का call the डिफरेंस कहाँ so-called पे आएगा constructor कि अगर method आप of a class. HTML5 के Every एलिमेंट यूज class कर has रहे हो one, तो वहाँ even पे if you don't ऑटोमेटिक वो वर्जन explicitly यूज define होने it. लग जाएगा HTML5 का, So we're अगर executing उस this, पे and टैग आप therefore यूज this कर रहे gives हो। us is a new object based on the वहाँ पे हमें material app 4 class. वर्जन तक पता नहीं You चल might पाएगा call कि हम the कौन सा syntax where you वर्जन add यूज a कर new रहे हैं, लेकिन keyword in 5 front of that. वाला As वर्जन of यूज Dart, कर रहे हैं, version ये 2, कैसे पता which लगेगा is here, and which अगर is the हमें future of Dart. HTML5 We don't के know एलिमेंट today. यहाँ पे मिलेंगे Now I तब। mentioned that we can HTML5 pass का एलिमेंट मैंने information क्या to बताया था, एक material आपको app. ऊपर से वो Let's do डॉग that टाइप in the HTML next लिखा हुआ lecture. रहता है, HTML करके एक वो ऊपर से कोड We वहाँ पे लिखा already रहता covered a है। lot of ground, उसके अलावा but we still कुछ don't हमारे see और anything भी on the वहाँ पे screen. टैग होते हैं, For that, we need to जैसे tell हेडर material बनाने के app, लिए which is हेडर the टैग wrapper होता है, for our फुटर entire बनाने app, के लिए फुटर टैग what होता to है, do, वो what ये to HTML5 के draw अंदर होता onto the है। screen. अगर हम So इसका that we यूज can नहीं pass कर रहे हैं तो arguments to ऑब्वियस सी material app. बात है कि वहाँ पे Build method expected the हमारा argument. HTML The का constructor of 4 material app वर्जन does ही यूज too. होगा या It 4 expects वर्जन ही so-called यूज होगा, named arguments, which ठीक means है। you first add a तो name. वर्जन हम For example, देख home तो is नहीं such an सकते हैं argument. कि ऐसे Then a हमें पता नहीं colon, चलेगा and कौन then the सा वर्जन value यूज you किया want जा to रहा है। pass for that argument. ये चीज The alternative are डिफाइन positional arguments, something ठीक we're है। using here. There we don't assign a name. Instead, the first तो आपको argument passed into the build लेकिन method हम लोग will यहाँ be पे इस चीज treated को as डिफाइन context नहीं in this करते हैं, case, तो ये so it पता will नहीं be stored in that parameter. The ठीक named है। argument case is something we'll all use throughout the course. Material app uses it. और There we किसी target the argument named home, and we pass a value for it. And home actually requires Hello? another widget. रोज This आपका will आवाज be a कट जा रही है, widget पता which नहीं is drawn onto the screen when the app loads. क्यों। आपकी साउंड बार बार कट जा Here, रही है। you typically use a so-called scaffold widget, another widget shipping with the material और package. तो कोई डाउट नहीं Scaffold creates a new page in your हाँ app रोहित, अभी तो with a ठीक आ रही है, nice बताइए white सर मैं ये background. कह रहा हूँ क्या ना करते हो That और can also be changed, by the way, but with a और सबस्क्रिप्ट background, वाले with ऑप्शन the ability to add an app bar, and so on. हम्म, And हम्म, scaffold therefore also needs to be configured by passing जैसे data into the पे constructor, एचटीएमएल का because सिंपल this एचटीएमएल will लिखा create an बिना empty सुपर page. To स्क्रिप्ट वो pass सब something to स्क्रिप्ट that लगाए हुए page, और we फिर can सीधे target उसमें भी specific रन करके arguments देखा here वो which तो we सीधे pass to scaffold. One of them is app bar. By writing app bar colon, we वैसे ऐसा can होना तो add नहीं a चाहिए, widget या which तो will be बाई rendered as the app डिफॉल्ट page जो targeting वैसे a शो कर symbol bar at the top of the लेकिन screen. And here, you guessed it, we again need a widget. चीज़ अगर Remember, नॉर्मल फॉर्म everything is a या widget. तो आपका टैग So गलत let's होगा, add a widget एक बार here. टैग आप चेक कर Thankfully, लेना ना कि रिकॉर्ड आपका
there already is a built-in one. App वेट साउंड bar आपकी like बीच में कट this. जा रही है, This creates an instance based on साउंड की the app दिक्कत आ रही है, bar आपके यहाँ से कट widget. जा रही है बीच चलिए में। And सर, मैं this कल now, बोलूंगा। again, needs configuration. What should go inside of that app bar? आई बात कल मुझसे There कंफर्म is करना, a फिर title बीच argument. बीच में आपकी आवाज़ And if बिल्कुल you're ही नहीं आ पा रही, wondering, कट जा how रही do I है। know that मेरी this आवाज़ has तो a आ रही है ना title आपकी तरफ से? property, अभी you तो can दिक्कत नहीं hover हो रही थी over ना app आवाज़ bar में? and you हाँ will सर, आ see गया। some documentation on which कुछ arguments it आज accepts. ऐसा लग रहा है कि There थोड़ा you नेटवर्क की see भी the दिक्कत आ रही है, title. क्या आप लोगों And की you एंड also से see शायद आ that रही है, this यहाँ से also requires a widget. भी दिक्कत आ रही है But you काफ़ी can ज़्यादा। also तो use another approach. जितना You भी अभी can मैंने put आज your ऑप्शंस बताए cursor हैं, इनको into आपसे the आप ट्राई argument करके list देखना, here between the ठीक है? parentheses अगर and कोई hit भी आपकी control दिक्कत space. रहती है, And डाउट then रहता your है, तो कल IDE फिर should हम give you इसको this क्लियर auto करेंगे। completion तो where कल it मैं ट्राई offers करूँगा कि some हमारा code जो भी snippets that ऑप्शंस can मैंने be आज used बताए here. हैं, इनका There you इम्प्लीमेंटेशन मैं also आपको see, होम if you पेज के अंदर start बता typing, दूँगा, that ठीक है? there is a तो होम title प्लानिंग के लिए argument you can target. वहाँ पे एक And ऑप्शन this, और यूज करना as you होता है saw when I लिंकिंग का, hovered over app bar, क्योंकि एक प्रॉपर requires होम पेज another अगर हमने widget, बनाना है which तो is होम पेज rendered में as एक a सिंगल title. पेज तो बनेगा हमारा, Here, we'll लेकिन जो use the लिंक last होते हैं widget कि of जैसे this होम में chain, क्लिक and that करके will होम be खुल the जाए, text गैलरी में widget. क्लिक Text करके गैलरी खुल is a जाए, widget तो which ये then takes a string लिंक as an तभी argument. Now, होगी this is a positional argument. We don't define the name. Instead, we just pass a string, and then this will be extracted inside of the text widget in the first argument in the argument list. So here we pass a string, which should be displayed as text, like easy list, because that will be the name of the app we में built. हमारी लिंकिंग काम नहीं करती है। Now, एक that सिर्फ was a lot of work, फिर भी आपको and आइडिया तो it लगना might चाहिए not कि all कैसे be होम पेज super बना सकते clear हैं, ठीक है? yet, especially knowing that और these कोई widgets डाउट नहीं किसी का exist फिर? can be confusing. But throughout this चलिए course, फिर you आज will के get लिए a हम इतना feeling ही for करेंगे, which widgets exist, ठीक and है? of course, I will तो also कट कर दूं show मैं you यहाँ से, where to हटा find दूं them इसको, all. स्क्रीन को। For now, let's take this as it is. यस And सर। कुछ I और don't कहना know तो नहीं about किसी ने? you, but I think that code can be written ठीक in है। a bit of a more readable way. तो आप लोग Now, लेफ्ट if करना चाहो you तो वहाँ से write that लेफ्ट कर code like सकते हैं। this, and you have that trailing comma here at the end after each parenthesis set, except for the last one, you can use a feature provided by all IDEs. In Visual Studio Code, you can find it by going to Code, Preferences, Keyboard Shortcuts, and then in there, search for